behalf of Department of Computer Science, ILM College of Engineering and Technology, you all are welcome once again. And our module 2 is a Statistical Foundation and Data Analytics through Python. Okay? Yes, ma'am. 1 minute. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this module will be go in same pattern of 5 sessions, and first 2 sessions, that is that I'm going to take a statistical foundation, and in which we are going to provide you the foundation or basic fundamentals about the statistics. See, if you know the statistics on average base, that is also good. If you are good in statistics, then that is very good. If you don't know anything about the statistics, so it is my request to you, please focus and understand what I am teaching in next today and tomorrow's class. So in the statistical foundation, in which we are going to give you a basic introduction, basic overview of statistics. So the topic which I am going to cover, that is introduction and application of the statistical and data science. And under this, we can understand why we study the statistics, what is the meant by statistics, types of statistics, types of variable, and level of measurement. See, many of you have studied the theoretical way, and manually you solve the questions. But here we can do with the help of software. Practically we can understand, we can solve the statistical problems with the help of software, or with the help of, we can say, applications. In second, I'm going to take you measure of central tendency, in which we can understand mean, mode, median, standard deviation, and variation. I will tell you how these statistical tools are practically applicable, so that whenever you go for a data science, and madam will teach you data science concept, Anjula ma'am, then these basic concepts should be clear in your mind. Then another topic I'm going to take, that is a correlation, in which we can understand what is a correlation analysis, the coefficient of correlation and coefficient of determination. What is the significance of all? And I will show you how these tools of correlation analysis, coefficient of correlation, coefficient of determination is used practically in our day-to-day life. Then fourth tool, statistical tool I'm going to take, that is a regression analysis, in which we can understand the least square principle and draw the regression line. So this is all over the, we can say, syllabus, a module, content of the module of statistical foundation. Okay. Now I'm going to start it first. Okay. So, is my slide visible to everybody? Yes, ma'am, it is visible. Please mute yourself. Or if you talk, then again you mute yourself, so that there should be a less disturbance. And understand, you feel very happy because I'm going to give a practical exposure. Whatever you learn in your classroom, that was the theory-based questions, and you solve with the help of manually, with the help of statistical formula. Ma'am, echo is there. Yes, I can sometime happen because of fluctuation of internet. Okay, so first of all, we can understand why study the statistics. Say, you take any catalog of any university, college, you will see that there is one subject, statistical, in every program. The program may be BTech program, the program may be your BCA, BSc, MCA, MSc, Computer Science, or the program BE program, or we can go for a degree programs, for example, BCom, BBA, BA, Social Science, Humanity. Everywhere there is one statistical subject.
Somewhere it is introduced, the universities and colleges introduce it as a subject, or somewhere it is complete one program. For example, you will get the degree. Generally, this is in the university. That means you get the master's in statistics, specialization in statistics. And some university also give the bachelor degree in the statistics also. So you will see, and somewhere the eligibility criteria of getting the admission in your professional degree, statistics and mathematics is compulsory. It should be in your 11th and 12th. Either mathematics, if mathematics is, then good. If mathematics is not there, then there should be a statistics. You should be study the statistics in your 11th and 12th. Then you will go for any professional degree in your graduation level. So this is the one of the reason you will see that the colleges, universities, UGC, AICT prefer that there should be a statistics subject in the post curriculum. Now, question is why study the statistics? This is important. You study the statistics. Initially, you are not that much mature to understand why we study this subject. Okay, you study it, you pass it, you get good score because it's a numerical subject. Numerical subject is you score good marks, and then later you should be apply in your job office. When you join any organization, you have to apply this. So first reason that it is my point of view, or I took the reasons as a universal point of view, general perception. Why I study the statistics? The first reason is that numerical information is everywhere. So everywhere you deal with the numerical information. For example, when you go to the market and buy a milk, so you deal with the liters. You tell that milk wala bhaiya, please give me 1 liter milk. Yeah, you talk 1 kg, half kg milk. You go to vegetable market, then you tell them, please provide me a 1 kg or 2 kg or 3 kg potatoes or vegetables. So you deal with everyone, means a layman person to educated person, you talk in a numerical way, numerical information. You're getting my point. Another is, for example, your performance. You appear, for example, you study whole year, whole semester, and then quantitative form, the question paper come in front of you. You write, but the teacher evaluate, convert your quantitative, your performance into a number. You get the marks. And marks is also tell about your performance. So means everywhere there is information. So we deal our day-to-day life, numerical information. This is the reason we have to understand, we have to study the statistics. You will see, I have quote some example. You see the newspaper. For example, Times of India, Economics Time, Mints, all newspaper are full of information, numerical information. Some statistical information is given there. You go for a news magazine, India Today, Outlook, Frontline, Business India, etc. You will see there is a lot of numerical data, numerical information. Data is in the statistical form. Then you go for some business magazines. You go for a general interest magazines, film fair, digital magazines, ELE magazines, and women magazines, Cosmopolitan, Femina, Vogue, Grazia, etc. Sports magazine. Boys are mostly interested in sports magazine. They read how many scores, how many runs are done individually, team-wise, individually player-wise, Sports Star, Sport World, Moneyball, etc. All are bombarded with the numerical information. So that means when you face any information, either internally or externally or in any way, that is a numerical form. Understand what is that information, what is that statistical figure, what is that data. So in that case, you should be educated, you should be knowledge, you should having a knowledge of statistics. Then you can easily interpret the
figures, you can easily interpret the numerical information. You can easily interpret the data. This is the reason, first reason, that I can, or even everybody can understand that statistical subject is everywhere in our course curriculum. I have taken the example, for example, this is the, for understanding purpose, if you know the statistics, you can easily understand this example, which I have given. What is this example? Number of cumulative cases of coronavirus COVID-19 worldwide from January 8 to May 12, 2020 by day. Okay, so this was the information and this was the graph. If you know the statistics, you know what this graph interpreted, what this graph tell, what is in the bottom, what is the horizontal. You say, if you know the statistics, you tell on bottom this is x-axis, on horizontally that is y-axis. On x-axis the days, months with some days are given, and on y-axis cumulative form, in a cumulative way, the cases, number of cases is given. Now interpret this graph. What this graph shows, analyze this graph, and when you analyze this graph, you will see that initially when you go for January 8 to Feb 2nd, you will say the corona case was very equal, similar, and then slowly and gradually it increased, and you will see the figure. That means it is a March 12, it is a worldwide data. That means it is 40 lakhs cases. It is a cumulative figure. It is not in a frequency. Don't get cumulative frequency. Aapne padhi hogi. I will tell you what is a cumulative frequency. This is a cumulative way. The data is in cumulative form, and you will see that the cases are tremendously increases till May 12. So in this way, this is the statistical data. If you know the statistics, you can easily interpret, or first analyze and interpret. What will be the interpretation? This is a very recent case, May 12. That means you can interpret that there is more chances of increasing the case, because the graph shows there is a continuously increase the cases day by day, month by month, and maybe there is a chances it may increase more in coming days. This is the one reason. Another reason why we study the statistics, that means this, I have, so for your understanding purpose, I have given some points, means first reason, second reason, third reason, so you can easily understand. But these reasons is not having any sequence. You can take second reason, you can discuss second reason first, first reason third, third reason first. It is up to you. There is a reason for reason, there is no sequence. So the second reason of learning a statistic is that statistical techniques are used to make a decision that affect daily lives, and that is they affect our personal welfare also. See, you know, just I told you, the statistical or numerical information comes from everywhere. Everyone, every organization, everyone can discuss in a statistical form, in a numerical form, in a numerical information. So this numerical information, or we can say the statistical techniques, are applied in every field of organization. And when they apply, they give some result to us. And what we do, we understand that results, we understand that output, and after understanding that output, we take the decisions, and that decision affect our personal life as well. So I have given some examples. I will discuss the examples so that you can get overview why we should study the statistic, why statistics is important. Okay, 1 minute, I will put the charger on. Okay, so everybody watch some examples I'm going to read, and everybody knows these things are applied in our
we can apply in day-to-day life. Everybody watch weather forecasting. Okay, and have you ever think how do you get the information? There are some computer model built on statistical concept. How weather forecasting is predicted, how weather is predicted, future prediction, what is tomorrow's weather, what will be day after tomorrow, what will be the weather in 1 week, this week. So it is possible because of taking the information of previous, that is prior weather with the current weather, and predict the future weather. So to predicting the weather, there is some inbuilt statistical concept. Prediction analysis, that is a very advanced tool of statistics. That means with the help of prediction analysis, there are some statistical tool to predict the future. With the help of that, the organization, the weather forecasting department provide the information to us, and according to that we can act. For example, if it is predicted that tomorrow will be a rainfall, then what you will do? You will take the precautions. You keep your umbrella with you. You take with raincoat with you, or you don't want to go out. If you want to travel, you travel. You don't, to avoid the travel, because it create a problem when there is a rain. So especially in raining and winter season, we really follow the weather forecast. Then statistical mostly used in the research. Every researcher, any field. Statistical is used in engineering also. Statistical is used in management also. Statistical is used in commerce also. Statistics is used in social science also. Undergraduate BBA, BCA, everywhere statistics are used. In every degree you study the statistics. Similarly, statistics is used in every field. But concept is same. Application is different. In engineering field, you use the statistics, but different manner, different way. You calculate the mean, you calculate the median, you calculate the mode, but the purpose is different. Similarly, statistical tools are used in the management also, especially in marketing, especially in sales, finance. So concept is same, but application, because why application is different? Because the nature of the business is different. The nature of work is different. The use of statistics, according to the nature of the business, there is a use of statistics. So researchers are using the statistics. So they use their statistical skill. If they are not good in a statistics, generally this information, everybody, those who work in a statistics-based research, they should be good in statistics. They should be having a statistical skills. Then they can understand what is relevant data to collect. What if they don't having a statistical skills, they collect the wrong data. If you collect the wrong data, you get the wrong results. So what happened when you get the wrong results? That means it's a loss of money, time, and data also. So as a researcher, you should be good in the statistics. Then what do you understand by insurance? Insurance company, everybody has some kind of insurance. Medical insurance, for example, home insurance, any type of insurance, everyone we can buy the product of insurance. You will see that when agent will come you and approach to you, he is having some data. And he calculate, he will, first of all, he provide the information about the insurance policies. Then ask your age, ask your date of birth, ask genders, ask dependent, and then he calculates some things, he calculates, and then he will tell what will be the premium amount of this policy. So then according to that, according to your budget, according to your financial condition, financial inputs, you buy the insurance. See? Then financial market, you have heard about the financial market. The daily financial market deals with the statistics. For example, presently you are the student, but in future you want to join the financial market. You want to become a financial expert.
So in that case, statistics should be known. You should know you should be a good statistics, so that you should understand the trade and business. You should understand which organization give more profit when you invest there, when you purchase the share of that organization. It is only possible when you are having a statistical knowledge. Then statistical concept of quality testing. Companies make a mini product on a daily basis, and every company should make sure that they sold the best quality item. So before going and launching the product into the market or selling the product into the market, the company take the test, and testing is happen with the help of statistical tools. If there is any fault found in a quality of the product, then again it need an improvement. When your test will not give an appropriate and good result unless and until company will not send the goods or product outside the company or not sold in the market. Second, in everyday life, we make decisions. Okay, we make a decision. For example, we keep an alarm for morning when we don't know that we will alive in the morning or not. Here are use of statistic base to make a prediction. You make the prediction. You know what you make the prediction. You make the prediction, for example, on Friday when your first session was completed, then you make now prediction. You make now the next week, Monday, second session will be started. Okay, we don't know about our life. We sleep and we don't know in morning we wake up or not. But still we make a prediction. We put the alarm. We get up on that time. So put the alarm. That means again you do some status. Then that means you do some prediction, and according to that you start your work. Means you take and take a decision accordingly. Then doctor predict the diseases. You see the medical test. For example, you go to the lab and do for example, diabetes test, sugar test, some different types of tests you do. If you will observe the report, that is there is also statistics, actual normal range and result. And if your result is beyond that or beyond not lies in that range, that means it shows there is some problem, and then doctor prescribe the medicine for you. Doctor predict the diseases on the basis of statistical concept. Suppose a survey shows that 75 to 80 people have cancer and not able to find the reason. So what is this data? 75 to 80%. This is the statistical data. And this data is collected from the doctors or from some medical organizations, hospitals. And they said every year 75 to 80 people have cancer, not able to find out the reasons. What is the reason of cancer? Not find out. When the statistics become involved, then we can better idea how the cancer may affect our body, or is smoking is the major reason of it. So we will identify some parameters. We apply some statistical tool on that parameter, and then we can find out which parameter is high. Smoking is high, tension is high, or lifestyle is high, or drinking water is a reason of cancer, or environment or surrounding is the reason of cancer. So on the basis of when we analyze with the help of statistical tool, we can exactly find out the reason of cancer. So the conclusion is that this statistical is applied in medical science or medical field as well. News reporter, media organization. Nowadays media is full of news. News reporter make a prediction of winner of election base. I took some example. There are a lot of examples on the basis of statistics. Media persons or media organization predict and provide the information to the end user or inform to the public. Statistical data allow to collection of information around the world.
Just so for example, now I have given the previous COVID-19. That was the example when of cumulative frequency of we can say suffering people who suffer with COVID-19. The data collect from worldwide. Then we can compile. We collect the data from worldwide, then or we collect the data from World Health Organization. They provide that data, how many people are suffer in different countries. So how it is possible? It is possible only with the help of statistics. So you can get the internet. Internet is also provide the data to us. Getting my point? Everybody understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So another one more reason I will tell you. The third reason of the statistics is, for example, why we study the statistic. The third reason of the study of statistics is that knowledge of statistical method will help us to understand how decisions are made and give you better understanding of how they affect you. You will need to able statistics help us to take the decisions. Getting my point? If you are a good statistician, that means you are a good decision maker. It helps you. It increase your insights. You will think everything in a proper and in a deep, and then you can take the decisions. Determine whether the existing how you will do this. You determine whether the existing information is adequate or additional information is required for any decision. For example, you want to take the decision, anything is with you. First of all, if you are a good statistician, you can understand the data which is in front of me. It is completed, it is sufficient, or I need more information, then I will take the decision. Can I collect more information about this concept or this process, and then I will implement it. In this manner you will think. And in this manner, only the good statisticians, mathematicians can automatically, your insight will be developed. You think in a broader manner. You will not think in a narrow manner. Gather the additional information if it is needed in such a way it does not provide a misleading results. For example, you add more information, then again you think. Is this information providing me a good result, or this information mislead the results? Then you summarize the information in useful and informative manner. Then what you will do as a statistician, if good statistician, you will summarize the information. You make the one good structure of that information which you have collected about anything. For it, then you analyze. Then analyze the available information, draw the conclusion, make an inference while accessing the risk of an incorrect conclusion. You both the things you will see. You go for a conclusion. If I will take this decision, these are the benefits. If I will not go for the this decision, I will not take this option, I will take some another option. These are the advantage. If I will take this decision, these are the advantage, but simultaneously there are some risk also. So in this manner, if you are the good statisticians, if you study the statistician or you're expert, you will go for a better decision. You become a better decision making because you will study the data or information in very deep manner, in depth. Understood? Any doubt till? No, ma'am. No, ma'am. So we understood why we study the statistics as a student. Now, many of you get the clear, many of you are having why this paper is here. What is the use of this subject in our curriculum? This is the social science subject. This is the art subject. Why we are the engineering student study the statistics? Why we are the management student we study the statistics? Statistics is everywhere because everyone is dealing numerical data, numerical information. So understanding the numerical information is very important. It is not only understanding. In my third point, when you are a good statistician, you think in depth. You think your insight will be broader. You think in a different manner. You think in a deep and then take the decision. You
think in both the aspect. These are the advantages, these are the disadvantages. This is the benefits, these are the benefits, this is the risk if I will take, if my decision will fail, so this risk will be happen. So this is the reason we have to be a statistician. We should be having a small, medium or large manner, we should be having a knowledge about the statistics. Now we'll come to the what is meant by statistics. We come to the definition of the statistics. This is a very important way. See, in general, statistics reflect, apply in two types. One, the statistic, if you are having a numerical information, that is a part of statistics. If you are having a graphical information, that is part of statistics. I have given that one example, COVID-19, the information from January to May, and parallelly there is a graph. There is a graph, that means in x-axis and y-axis, and that is a graphical representation of the statement. And so therefore statistical represent the numerical information, statistical represent a graphical information. So what is the statistics? The statistics, the science of collection. Collection, see, आप बोलते हो, you are telling कि I have collected the information, I collect the data. You think that data is really useful? Getting my point? Is that data give really benefit to you or your organization? That we have. So that means, so it is a science of collection. So you have to apply some principle. You have not to go and collect the data randomly and later you find out there is no use of this data. This data का कोई use नहीं. So you have to apply the principle. You have to apply some methods. You have to apply some procedure. So it is called that the statistic, the science of collection. You collect, that means science reflect means principles. Science of collection, after collection, organize. Data is always unorganized, scattered, meaningless. यहाँ से data आया, वहाँ से data आया, इधर से आया, different source you have collected the data. So what happened? The data is unorganized. Then presenting the data. That is another important thing. You have to present what is the method, how you are going to present your data. After presenting, then analyzing. आप पढ़ो उसको, एनालाइज करो, समझो, अंडरस्टैंड क्या मिला आपको उस डेटा से, what is in that data, and then come to the interpretation, conclusion पे. So the science of collection, analyzing, presenting, organizing, presenting, analyzing, and interpreting data to exist in making more efficient decision. Why data is required? See, when I was a student and I was studying, then one thing about the management is set. Money is the lifeblood of organization. Means, just like blood work in our body, same money work in the organization. But in a modern definition, management, the data and information is the lifeblood of organization. Nowadays, there is huge money with everybody in the organization, but to sustain the organization, to survive the organization for a long period of time, it required appropriate data and appropriate information, because on the basis of information you take the decision. If you fail in decision, your organization suffer, your organization will go in losses. So all your profit, your customer maximization, your market enhancement, everything is depend upon decision. And decision, when it will be good, when you can collect the proper data. That is the science of collection, organizing, presenting, analyzing, and interpreting. These are the phases. These are the steps of data, of statistics. Statistics in what? We collect the data, organize the data, present the data, analyze and interpret the data to
assist in making, जो हमें assist करता है, which assist us for what purpose? To take the effective decision. Okay, so what I have written here, I have written with some examples. I will read it example, then I will go for a next slides. Statistics refer a numerical information. I told in first, statistics means numerical information. For example, average starting salary of graduate employees. That is statistical figure. Number of COVID patients and number of people recovered. That is statistical information. Here we can get number means numeric. Number of COVID patients and number of people recovered. The number of death due to alcoholism. India is expected to have 34.30 shares of youth in total population by 2020. Means India expected our youth population will be 34.30% by the end of 2020. The passenger traffic in the railway sector amounted to over 8 billion across India in fiscal year. Fiscal year means financial year 2019. Therefore, a collection of numeric information is called. So in different examples I have given. I have given the starting salary of graduate, COVID patients, number of COVID patients and number of patient recovered. Then I talk about the death rate of because of alcohol consumption of alcohol. Then India expected how much youth. We say our country is full of youth. Like you people, like the student. So we expect it will be 34.30% share of youth in total population by the end of the 2020. I talk about the railway, 18 billion across the fiscal year, financial year 2019. All this all this information will represent the numerical information. And this numerical information is called as statistics. So our statistic, as per this diagram, statistic represent a numeric information. On the other hand, same numeric information, if you represent in some pictorial form, graphical form, that is also statistical. The numerical information is present in a graph form. A graph is often useful for capturing readers' attention and portray a large amount of information. Say, instead of reading something or writing in a theoretical manner, if you represent that data in a graphical manner or pictorial manner, it is more better to understandable for you also and other also. And the graphical representation of the statistical data or numerical data is the best example. So statistical, what is meant by statistical? This is a standard definition, but you don't go mug up this definition, you understand the definition. Why it is written science? What is a collection? Why or what is the organizing? What is the presenting? What is the analyzing? What is the interpreting? And then what? At the end, this data assists in making more efficient decision making. Another is the statistic represent graphical information. You'll see the number of casualties here. Casualties, this is the railway data. Casualties happen, rail accidents. Accident and killed. Injured and killed. Blue is represent death and this orange color represent injured. So this is a number of casualties happen because of rail accident. So you can easily interpret it. This is our 2009, 10, 11, 10, 11, 11, 12, last 1, 2, 3, 4, 5, 6 years data. You can easily analyze, and you can also analyze in which year more injured happened, and you will easily see this orange color bar in year 2011-12 more cases was injured, and death cases happened 2010-11. There was more. Blue bar indicate death cases. Understood? Any doubt? No, ma'am. Shall I proceed? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, very important thing. Generally, I'm also professor, and I am also teaching. I'm also teacher, and you are also dealing with teachers. Your teacher teach.
Generally, one teacher, when he enter into the classroom, what is statistics and start the problem. Nobody can explain the concept. So important is concept. When you understand concept, you can easily implement it in a practically. Okay. So types of statistics. There are two types of statistics. One is descriptive statistics and another is inferential statistics. So we can understand both types of statistics. Anybody can talk to you. What are the types of statistics? So you broadly use it. There are two methods of statistics. One is descriptive statistics, another is inferential statistics. So first of all, we can understand the descriptive statistics. Okay. What is a descriptive statistics? Same, we can say definition of statistics. Method of organizing, summarizing, presenting data in an informative way. Any information, anything, any data which you are presenting in an information form, that is called as a descriptive statistics. Getting my point? I will give the example. When you read the newspaper, getting my point? When you read the paragraph of the newspaper, and any numerical information is there. There is an information in paragraph written about the COVID-19 cases, about the coronavirus cases. If it is in the paragraph, this much cases happen and this much get recovered and this much of the cases are in hospitalized, like this in the paragraph, that is called as a descriptive statistics. Then when data is in an informative way, in a paragraph, figures are there, but that figures are written in a paragraph form. That is called as a descriptive statistics. I will give the example. See, a few examples I have quoted here. One paragraph I have taken from somewhere about the Indian population. You understand it. A few examples that you can see. India is the second most populated country in the world with nearly a fifth of the world population, according to 2019 revision of the world population prospect. Population stood at this much figure. What is it's the second populated country in worldwide. Getting my point? According to 2019 revision, and the population should be this much crore. So what is written? What is the interpretation of this paragraph? This paragraph interpret about the Indian population and tell there is India is the second largest population, and according to the revised figure of 2019, the population is this much. Okay, this much crore. So your statistical data is in a informative manner. This is called as a descriptive statistics. Second example, during 1975 to 2010, the population doubled to 1.2 billion. The Indian population reached to the billions mark in 1998. Means in this population, in this paragraph, it tell about the population, but it start from provide information from 1975 till assume surprising. For example, we can predict there should be 1.5 billion people to 2030, and its population would set to reach 1.7 billion 2050, and its population growth rate is 1.13% rank. That means 112th in the world in 2017. Second paragraph also provide the information about the Indian population. India is more than 50% of its population below the age of 25 and more than 65% below the age of 35. It is expected that in the 2020, the average age of the Indian will be 29 years. Compared to the 37 for the China and 48 for the Japan, and by 2030, India dependency ratio should be just over 0.4. So you will see that complete all these three paragraphs
project about the Indian population, but information is different. So when the statistical information is written in a paragraph form or in the form of information, that is called as a descriptive statistics. So क्या होता है? What happen when we get this type of information? We will convert this information in some meaningful form. We make some table. We make the table year wise. We make the table 2019 to 20, this much information. This much 2019, 98, this much population. We predict that 2030 this. We make the table, and then we can apply the statistical tool like frequency distribution. We can apply various charts. We use a mean. We use a percentage. Then we can get we can apply this information in a statistics. But if it is an information, that is a descriptive statistics. For this descriptive statistics, in this informative way, we will not apply any statistical tool. But when we want to apply the statistical tool, we arrange this data, some tabular form. We pick the figures, and each figure we have to determine some parameters. And then that parameter and figure we can use or we can apply the statistical on that. But before that, when the information is like this, then it is descriptive statistics. Understood descriptive statistics? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now we'll go for a inferential statistics. Okay? Inferential statistics means some portion, some part. Getting my point? Inferential का मतलब है कुछ portion, कुछ part. पहले first of all we can understand what is the inferential statistics. The second type of statistics is inferential statistics, also called as statistical inference. Statistical inference. Inference का अगर general English देखेंगे, normal English देखेंगे, the meaning is portion, part, some part. The main concern regarding the inferential statistic is finding something about the population from a sample taken from the population. See, inferential statistics में what happened? So inferential statistic means we take some portion of data. And where we take the some portion of data? From the population. Because to analyzing the complete population, it is very difficult for the researcher, for you, for me. So what we can do? We take the sample. I'm going to give the first one example. You have seen your mother when she's cooked the rice, and nowadays we use the rice cooker, that cookers, every cookers we can use, but earlier we cook the food, rice in bowl, in pot, and you have seen that the rice is cooked or not. She pick one sample, one we can say bit, dana, and check that rice is cooked or not. On the basis of that one dana of rice, and she understand the whole rice is cooked or not, or it need a more steam or not. It require more to cook or not. So what she did, she picked one sample. On the basis of that sample dana, and she determined, she come into the conclusion the rice is cooked or not. Similarly, if we use the inferential statistics, or statistical inference. The concept is that we collect the data, but we collect the data from some certain population, but the population is huge, and to collecting the data from the population, the first step is difficult. Then you understand what analyzing. First is collection, organizing, presenting, analyzing, and then interpreting. All other steps also automatically become difficult. So what in inferential statistics say, don't go for a population, take the sample.
Standard sample, I will take the statistically, I will tell you. Generally, it said that random, when you go for a random sampling, you take the randomly, that means it should be 35% of the population. If you know the population. For example, the population is 10,000. You take the sample of 10,000, 35%. That sample should be applicable for the study purpose, for the further we can say application of the tools. I will give a very simple example to you. Okay? The main concern regarding the inferential statistic is finding something about the population from a sample taken from that population. I will give a very practical example. See, read my example, understand my example. For example, the total student in this webinar are 150. ठीक है, आप पूरे इस webinar में you are attending. For example, presently how many are there? There are 102 presently. I can take 100. 100 is there, but register are 150. We can assume there are 150 students in this webinar, attending the webinar. This 150 is presently in this webinar is population. It is called as a population. Now, what I did, I took 53 students. I applied the 35% of 150. I picked the 35 students. Which student? Randomly, anyone. We have randomly picked 35 students and find out the perception is this program. I have sent the questionnaire to you. उसमें तो randomly नहीं है. उसको भी हम कैसे use करेंगे वो बताऊंगी मैं आपको. ठीक है? So example. Now we have randomly picked 53 students and find out उन 35 का क्या करना है अब हमें. What we have to do 35 students, we have to or I have asked them, what is your perception of this program? Good, bad, average, poor. In this manner, I asked them. So what is here? What you understood here? This is inferential statistics. I have taken 35, I picked the 35 student randomly from my entire population. The total number of registered student in this webinar are 150 and 150 is the population of this webinar, complete population. But I have not asked to everybody. I randomly picked the 35 students and I asked them, what is your perception about the program? That is called as inferential statistics. Okay. In inferential statistics, two important things is required. One is population, another is sample. When you take something, when you identify, when you take the decision, when you apply the test, statistical test on sample data and come into the conclusion, that means, for example, whatever the perception for 53 students, I can take the average. Most of the students say very good. Okay, I will say out of in 53, when I calculate the percentage, 90% say it is very good and 10% say good. ठीक है? या मैं बोलूँगी 8% say good और 2% say average. But majority say very good. On the basis of that perception of that 53, I can assume that this perception will be for same population. All 150 student will be think like that. उनका भी वही perception होगा. Sample on the basis of sample, I find out. This is called as an inferential statistic. Inferential statistic, the method used to estimate a property of population on the basis of sample. Sample के base पर population की property को identify करना. 53 in which, for example, 90% say good. So I can assume out of 50, 150, again 90% will say the program is good or very good. So what I did, the method used to estimate the method used to estimate a property of a population on the basis of sample.
So what is a population? The entire set of individual or object of interest or measurements obtained from all individual or object of interest. That is called a population. Individual, you can say individual, you can say object, which is measurable, which is quantifiable, which is part of my study, which is required for me. That is population. And sample is what? A portion, a part of the population of interest. Just my interest is what I should find out what is the perception of students towards this program. That is interest. That is my interest in population. I will not, apart from this 150, there are a lot of students in universe or in all over India. But I am only interested to whom? Those who are watching my webinar, those who enroll this program. I am not taking the opinion of that students who is not part of the program. That is called a population of interest, sample of interest. This is called as a inferential statistics. Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any doubt? Yes, Any doubt till? No, ma'am. Shall I proceed? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, see, data play very important role. And as a statisticians, you should know how to play with data. And how to play with data, how to, we can say, how to get the insights, how we'll enter into the data in depth and get the results, which will be helpful for organization, society, to whom that is required. So in data, variable play a very important role. Just like in Python programming, you see, we assume the value with variable. Same here, whatever the numerical data is there, number data, that is assigned with variables. Without variables, we will not able to do any type of analysis. So variable in statistics play a very important role. So we understand what are the variables and what are the types of the variable. Variable is the meaning same. So to give a name to your data, or at the time you can assign the value with data. So you assign the value with variable. That is called as a variable. That is a data name. So there in statistics, types of variables. There are two types of variables. One is qualitative variables and another is a quantitative variables. जिसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं type of variable qualitative data and quantitative data. Say quantitative data, to apply the statistical tool on quantitative data is very easy. Very easy. For example, marks of 10 students. ठीक है, 10 students के computer में, for example, statistical marks, and I'm asking you, find out the percentage. Convert this marks into the percentage. Find out the mean. Find out the average marks. What is the average marks of this class? So marks, any data which is numerical form, that is called as a quantitative. And analyzing, applying the statistical tool is very easy. But on the other hand, we are having some data which is qualitative form. And that is also important for us. So what statisticians do? Statisticians take it as a qualitative, but later convert it into the quantitative. I will show you how qualitative data will convert into the quantitative data. ठीक है? First of all, पहले concept समझ लो. First understand the concept. Types of variable. There are two types of variable. One is qualitative variables, quantitative variables. Similarly, quantitative variables mean quantitative data and qualitative data. So qualitative variables. Qualitative variables means that is not represented with any numbers. That is not represented any, we can say, figures, value. In English, in general way, that represents some adjective.
अगर मैं आपसे बोलती हूँ फॉर एग्जाम्पल देयर इज दीप इन माई क्लास, in this class, and I will say Deep is intelligent. He is intelligent boy. What is intelligent? Intelligent is adjective. मैं उसकी प्रशंसा कर रही हूँ. I praise him. But I will tell कितना intelligent है वो? How much he is intelligent? Can you tell me? Can you tell me how much intelligent he is? That is quality. That reflect the quality. I say Deep is intelligent. Intelligent is quality. But I can't measure. That is a qualitative variables. I can't measure the quality. अब समझ ध्यान से सुनो, आगे अगर ऐसा कुछ है तो हम मेजर भी, हम उसको कन्वर्ट करते हैं न्यूमरिक में. ठीक है, आराम से सुनो बात को. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. स्टैटिस्टिक्स जब पढ़ रहे हो यू शुड नो दीज थिंग्स. सो आई क्वालिटेटिव आई से Deep is intelligent boy. ठीक है. सो इंटेलिजेंट रिफ्लेक्ट एडजेक्टिव. Okay, in my class in ILM I tell Asif. Asif is very brilliant boy of class. He is a topper. So what I reflect, I say, these are the topper, intelligent, brilliant. All are the adjectives. If we talk about the English terminology, English, these are the adjective. But in statistical form, brilliant, topper, intelligent, beautiful. For example, I feel hunger. I am hungry. How much I am hungry? I don't know. Can you quantify my hunger? कितना मैं भूखी हूँ? Hunger is again qualitative. It's adjective. I'm hunger. Getting it? I'm satisfied. Satisfied again qualitative. I can't measure the satisfaction. How much you are satisfied? This is qualitative data. So this is qualitative variables, and qualitative variables every time it is in English form we can say it is adjective, or in statistical form we can say it is a qualitative, which is non-measurable because there is no numeric. There's no number. And in this type of data, we can't apply any correlation, percentage analysis, mean. Can we apply? No. Can we apply? I want answer from your side. Students, I want answer from your side. No. आप बता ही नहीं सकते हो. कितना खूबसूरत. Some girl, XYZ girl is beautiful. And beautiful. What is it? What is a beautiful? हम केवल क्वांटिटिव को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, क्वालिटेटिव को नहीं. हम क्वांटिटेटिव को कर सकते हैं क्योंकि क्वांटिटेटिव द वेरिएबल इज रिप्रेजेंट द नंबर्स, न्यूमेरिकल. बट क्वालिटेटिव रिफ्लेक्ट ओनली क्वालिटी, और वी कैन से क्वालिटेटिव मींस व्हिच इज नॉन न्यूमेरिक, and it is adjective. It is any type of adjective. You are hungry is adjective, means you feel bhuka. You are brilliant is adjective, qualitative. That is your quality. That is reflected qualitative. So there is no number. But when there is a qualitative data, you can't use the statistical data. Getting my point? Now understand. The example I have taken, brand of PC. आप Panasonic, sorry PC तो टीवी का, ये Panasonic थे. आप ये बोलते हैं HP, Apple. These are the brand of PCs. लैपटॉप के ना, Apple लैपटॉप, Mac, PC अगर आपने ले लिया Dell, है ना? Then marital status. आप क्या बोलोगे? Married and unmarried. Okay, please keep quiet. Please don't make noise. Okay. And I have given the questionnaire. If you give the answer, then immediately mute yourself. I have given the question to you in which I have used one variable that is qualitative variable. Can you tell me which variable was qualitative variable? एक variable का नाम बताओ that was qualitative variable. Questionnaire in morning I have given, and in which one variable was qualitative variable. That means you need example of it.
Yes, please tell me. Ma'am, love of a mother for her child. Love is mother for a child, love for anyone. The love word is a qualitative. Okay, but in morning I have given one questionnaire. I told you to fill it, and there is a one variable that is a qualitative variable. And those who filled the questionnaire, can you tell me which variable was a qualitative variable? Gender. Gender. Which one? Gender. Gender, yes. Gender was qualitative variable in which what you will write male and female. Okay. Then gender, it is given here. Gender is given here. Hair color, black and white. That is a qualitative variable. So type of variable are qualitative. We understood the quality. Now we go for a quantitative variable. Okay. Quantitative variable again classified into one is discrete and continuous. Okay, discrete का मतलब ये है कि that is no without any whole number, perfect number. Okay, discrete. Child in family. तो आप क्या बोलोगे? Sorry, child नहीं. Children in family. What will be the answer? 2.5. No, ma'am. 1, 2, 3, like that. Yes, you will give the answer. You will give the answer. In children in the family, either one child होगा तो 1, children होंगे तो 2, 3, 4. ठीक है? Strokes on a golf hole. The stroke is 1 stroke. Okay, या golf hole बोलो या कहीं पर जब stroke दे, that is count is 1. And when cricket batsman make a run, hit the ball through bat, that is also counted as a 1. एक मारा एक, लेकिन वो जब बाउंड्रीज तक गया तब उन्होंने कुछ और रखा है कि उसके पुल उसने इतने अच्छे से मारा है तो उसको 4, बाउंड्री से बाहर गया तो 6, तो ऐसे उससे रखे. लेकिन अगर वो एक ही मारता है, एक हिट है, बिलो बाउंड्री है, तो इट इज काउंटेड एज व्हेन जितना वो रन करेगा उतना वो रन करेगा, भागेगा एक बार तो 1, 2 बार 2, ये नहीं कि एक बार भागा और बीच में से ही वापस आया. 1.5 नहीं काउंट होता है, isn't it? TV set owned. How many TV set are in your home? 1, 2. 5. ठीक है, 5 है. ओके. 1, 2 आपने बोलेंगे 1.5, 1.2, 1.3, 1.0, 1.01, ठीक है. 4.0. 4.0 पॉइंट में 0 ले ले, दैट इज 4. ओके, मतलब बट इट इज काउंट इन अ डिस्क्रीट मैनर 1. ठीक है, पॉइंट का कोई सिग्निफिकेंस यहाँ पे नहीं है. ये आप खाली अब बताने के लिए आप बता रहे हो 4.0, 4.1. अदरवाइज देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ पॉइंट इन डिस्क्रीट quantitative data. Then we go for a continuous. Amount of income, tax paid. Here you can take a decimal number, you can take a slab. Slab समझते हो? Income tax हम इतने से इतने तक slab का एक range. ठीक है? Here, can you give me the example of in questionnaire I have taken one continuous data. Continuous data, एक variable मैंने whatever the questionnaire I have given in morning, in that there is a one variable that is continuous variable. Can you give me the example which was the continuous variable? Age. Age. Why you say age? Because age is in a continuous series. Scale में था, range में था, है ना? I take the 15 to 20, 22, 25 in this manner. That is continuous series. Weight of the student. Weight है, मैंने देखा मेरा weight, my weight is 75.2, है ना? Yearly rainfall in Noida, that is rainfall भी something ratio fraction में count होता है. So that is here discrete is
in which no fraction value come, simple language में अगर मैं बोलूँगी, no fraction value come in a discrete variable, qualitative variable, and in continuous, you take the scale, you take the fraction, you take the ratio, any type, any other type of data will come under the continuous qualitative variables. And these are the examples of variables. Any doubt in types of variables? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Shall I proceed? Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Now, very important part it is very important. Whatever I am going to give, it is a very important for data analytics and data science point of view. Data science is much more. It is not only limited to statistics. There is a requirement of some mathematics also. Mixture of data science and statistics then become a machine learning algorithms. Getting my point? Initially, there is data analytics, that is statistics. Nowadays, data science is more popular. जब data science नहीं था इतना popular, तो जो लोग क्या करते थे, analytics तक थे. They are till analysis. But now the companies go more in depth, more in deeper. They enter into data science. They want, instead of human can analyze, why not machine should analyze these things? So that is a machine learning. What is machine? How algorithms are built? Algorithms are built through our insights, our experience, through our knowledge. जो भी हम समझते हैं, जो भी हमने फील किया, जो भी whatever we have gained, वो सारा डेटा को ले लिया गया और उसको एल्गोरिथम फॉर्म में मशीन के अंदर इंस्टॉल कर दिया गया. अब whatever we will do, now we are not doing, machine is doing. That is machine learning. वो डेटा साइंस का पार्ट आ जाता है. So this is means you have to initially understand till data analytics. You should be strong. And then you can enter into data science. जब तक आपको पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, फिर आप डेटा साइंस में भी नहीं कर सकते हैं, फिर उसके सॉफ्टवेयर्स को भी आप समझ नहीं पाओगे. मेरा यहाँ पे पर्पस सॉफ्टवेयर का इतना नहीं है, खाली सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगी, लेकिन मेरा यहाँ पे पर्पस है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो. ठीक है. तो लेवल ऑफ मेजरमेंट से we understood, यहाँ पे level of measurement बहुत important है in statistics. ठीक है. We understood the types of variables. Types of variable we understood qualitative variable and quantitative variable. Quantitative variable को quantify करना, to apply the statistical tool is very easy. But qualitative data we can't apply the statistical tool. But this data is also useful. So what we have to do? We have to convert this qualitative data into the quantitative data and then use the apply the statistical tool. That I will show you later. First of all, we can understand the level of measurement. See, there are 4 types of levels of measurement of data. Data को आप कैसे measure करते हैं? और सबसे important है, on the basis of this level of measurement, then you can identify that which statistical tool is applied to which level. Most of the people fail. Most of the people never understand. बड़े-बड़े अच्छे PhD holder हो या researcher हो, MPhil हो, उनके पल्ले ही नहीं पड़ता है कौन से डेटा पे कौन सा statistical tool लगाना है, क्योंकि concept ही नहीं पता है. मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ क्वेश्चन यहाँ पे? Yes, ma'am. हाँ, आप लोग बहुत छोटे हो अभी, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर आप इस चीज को समझ रहे हो, दैट इज वेरी गुड. बट बिग रिसर्चर, मतलब मैं बोलते जो PhD कर रहे हैं, आई हैव सीन इन माय life or career, I am very close to very researchers and they never understand. सबसे पहले उनको दिक्कत ये होती है कि which data type, which statistical tool is applied, because that is a lack of information, lack of knowledge. I will tell you both the things. First of all, for that, which statistical tool is applied for which data type, for that purpose you have to understand the level of measurement. So level of measurement means, first of all, understand the level of measurement. Level of measurement means we measure the nature of our data.
We understand the nature of our, we can say, figure, or simply way में data. That is, we can understand the nature, that is level of measurement. And level of measurement generally we measure in a 4 ways. One is nominal level data, number 2 ordinal level data, number 3 interval level data, and number 4 ratio level data. ये 3 तरह के level of measurements है. ठीक है, कोई भी अगर आपसे पूछता है स्टैटिस्टिक आता है, what is the level of measurement, you should be easily, you should tell level of measurement means we can identify the level of our data. In what is our level of data, what is the nature of data, and level of data is understanding why it is required to understand, because on the basis of level of measurement we can understand which statistical tool, क्या यहाँ पे हमें एक percentage लगाना है, क्या हमें यहाँ पे मीन लगाना है, क्या हमें यहाँ पे मोड लगाना है, क्या हमें यहाँ पे कोरिलेशन लगाना है, which statistical tool should we use. तो उसके लिए ये नहीं है कि any statistical tool you pick and apply the some sort of data. It is statistically wrong, very wrong. Technically it is very wrong. You should use the statistical tool on the basis of level of measurement. You should pick the statistical tool on the basis of nature of data, and for that purpose you should understand the level of measurement. So I will tell you what is the level of measurement. Simple. First data level है nominal data. Nominal data जो है, that is the first level. Nominal level data. For the nominal level of measurement, observation of qualitative variable can only classified and counted. There is no particular order of level. ठीक है, देखो qualitative, I will say that nominal data means क्या है, any data that means in a qualitative form that can be classified and quantified. ठीक है, that is nominal data. Means कोई भी qualitative data, मैंने अभी आपको example दी qualitative data का, color of hairs, gender, यहाँ पे भी दे रही हूँ मैं gender. Then qualitative data में हमने एक example ली, which example we have taken, brand of PCs, है ना. तो ये जितने हैं जैसे क्वालिटेटिव, ये सारे जो है ब्रांड ऑफ पीसीज, क्वालिटेटिव जितना डेटा है आपका, वो आपका नॉमिनल डेटा कहलाता है. ये आप ध्यान रखो, डेटा नॉमिनल. क्या बोल रही थी? या प्लीज मम्मी से बाद में बात करो. मम्मी कुछ बोल रही थी मेरे को. ठीक है, nominal data for the nominal level of measurement, observation of the qualitative variable can only be classified and counted. ठीक है, qualitative data should be counted, that is converted, that is classified and counted. There is no particular order of the level. अब समझो, मैं आपको समझाने की बात समझाती है. आप इसको इस तरह से लो, all the qualitative data come under the nominal data. For example, I am saying a name of the colors. So what will be your answer? आप नाम लेना शुरू करोगे. ठीक है, name of the colors is the qualitative data, and qualitative data come under the nominal level data. ठीक है, अब I will tell you name of the colors. आप क्या करोगे? Red, green, white, blue. कोई शुरू करेगा green, red, white, blue. कोई बोलेगा blue, red. In this way, there is no any order. Anyone start any color. I never say, my question is only name of the colors. Then you start the name of the colors. I am saying the name of the cities, then you start the name of the cities. Noida, Ahmedabad, Vadodara, Aurangabad, then Pune, different cities you are going to give the name. Then I say gender. Some say female, male, some say male and female. Which order hai? There is no order. Is there any order? No. No order. So qualitative data later, after at the time of analysis, we can quantify it. We can convert it into the quantity, numerical form, or we can say numbers. That is called as a nominal data.
ठीक है, and in nominal data there is no order. Can you give me any other example which I have given in the questionnaire as a nominal level data? जो क्वेश्चनियर में मैंने दिए थी, कोई एग्जांपल ऐसा देंगे जो नॉमिनल डेटा की थी? मैंने सब आपको डेटा वहीं दिए हैं. There are two such type of variables which represent a nominal level data. Gender. Yes. Louder. गलत है तो गलत है. Names and gender. Gender. Gender and Names. names तो पूछा ही नहीं मैंने. नेम तो था ही नहीं वहां. सोचो. Ma'am, very good. That is scale. Number is given there. Good को मैंने 5, excellent को 5 दिया है. That is not nominal level data. Gender is okay. Gender आप यहाँ देख रहे हो. Gender is nominal. No means आप समझो nominal data means qualitative data. Later we can use for analysis. We convert it into the quantified. जल्दी समझेंगे तो मैं जल्दी आगे का भी बताऊंगी. Religion. Which? Religion. Departments. No, I'm saying there are 2 variables in my questionnaire that represent a nominal level data, and I need which are those variables. Education. Section or departments. Okay, departments is there, but my question is the question for my questionnaire. The morning I have given one questionnaire in which I have given 4 to 5 questions, in which two variables, 2 parameters which are based on nominal level data. I want which those are. Age. Age. Yes. No, age is numeric. Education. Education, yes, exactly. One is gender, another is qualification, education. I ask SSC, HSC, graduate, undergraduate, postgraduate. I ask this. So education, qualification, and gender are nominal data, nominal level data. And that what you have written for gender, you pick either on male or female. Or in education, I have given the option UG, SSC, senior secondary school, higher secondary school, undergraduate, postgraduate. In this manner, I have given some, I supply some information and you opt that. And here, that is also qualitative. Education, qualification, and gender is the. और कौन सा था? Please tell me. Have you attended all the modules or attending the modules? Yes, no, or maybe. हाँ, तो yes, no भी nominal है. Good. That on yes and no में भी जब भी questionnaire कोई रहा ना, that come under the nominal. Good. Yes. Yes, I am agree. Whenever the question come in yes and no, that also come under that data. Yes and no. That is nominal. So in this manner, there are three variables in my question set that represent the nominal level data set. So what are the properties nominal level? Data categories are represented by the label or names. उसके नाम से, जैसे for example, data category, name of color, name of cities, gender, education qualification. Do you attend? Do you plan to attend? You continue to attend the webinar? Yes and no. In this way, that is a nominal, and the answer is no order. For example, in yes and no, we are writing in general way. We are writing yes and no. आपने no और yes लिखा तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा? No, ma'am. कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप yes लिखो ही ना. हमारे daily routine, what we say, we take yes first and no next. But if you write down no or yes, then again no. फर्क कहाँ पे है? When it make a difference? It make a difference on the basis of the perception of the respondents, perception of the students. वो कितने yes है, कितने no है. वहाँ पे
फर्क पड़ेगा, बाकी लिखने में नॉमिनल डेटा को लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इवन व्हेन अ लेबल आर न्यूमेरिकली कोडेड द डेटा कैटेगरी हैव नो लॉजिकल ऑर्डर। देखो यहाँ पे मैं एक हिंट दे रही हूँ, व्हेनेवर यू आर हैविंग ए नॉमिनल डेटा, क्वालिटेटिव डेटा, initially we can't say, we can't use that for statistical purpose. We have to convert the qualitative variables into the quantitative variables, and for quantitative variables how to convert, we give a numerical coding codes. मैं बताऊंगी आपको, इसलिए intentionally वो morning में मैंने आपको क्वेश्चनरी दिया था. So first level of measurement is nominal level data. And nominal क्या है? It represents the qualitative variables. बस इतना याद रखना, and without any order. What is a nominal variable? Nominal level data represent a qualitative variables, and without any qualitative variable, without any order. The example of name of colors, name of girls, name of boys, name of city, gender, educational qualification, or yes and no. Are you feeling hungry? Yes, no. This hunger, okay, which is not in, initially that is not in the quantitative, that is qualitative. Later we can make it, when we use that part in our analysis, we can convert it into the quantitative. ठीक है. So first level of measurement, everybody tips पे होना चाहिए. मैं quiz लूंगी, I will take the quiz. I will take the quiz of previous, उसका भी लूंगी, Python का भी. I will take the quiz of this also. So you should be the answer. You should be know in tips पे, in your mind. मतलब बिठा लो इसको. Nominal हो गया. Now second data level is data is ordinal form. Order. वो ऑर्डर ही होना चाहिए. Then it represent the order form. Order level data, the next highest level, nominal is little low level. उसके बाद up form of data level है ordinal data. The next higher level of data is ordinal data. और ordinal data represent कैसे करता है? The data is represent some order. For example, rating of students' performance show in table. जैसे ये rating. For example, rate and frequency. मेरी क्लास में अगर इसका टोटल निकालेंगे उतने स्टूडेंट्स हैं. There are that much students. अगर if you take the total of frequency, ठीक है. उनमें से out of those students, 6 students are excellent. I told you, I am saying excellent. ठीक है. On what basis I have given excellent? Because I conducted some exam, I conducted some quiz, I conducted some test, whatever they wrote in the question paper, I convert it into the quantitative form. I given the marks, and on the marks, on the basis of that marks, I determine some parameters. If the marks is more than 80%, that is excellent. If marks is more than 60%, that is good. And marks is more than 60, lies in between 59 to 50, that is average student. And marks is below 40, below 50, that is poor. So what I found that this is the order. Order कैसे बनाया उसको? Excellent ने बनाया, good ने बनाया, average ने बनाया, poor ने बनाया. अगर आप इसको रिवर्स करोगे वो भी ऑर्डर सही है, लेकिन आप उसको ऐसे गुड पहले लिखोगे, फिर एक्सीलेंट लिखोगे, फिर उसको एवरेज लिखोगे, फिर पुअर लिखोगे, या बीच में कहीं पुअर लिखोगे, दैट इज नॉट एन ऑर्डर. ऑर्डर शुड बी ऑर्डर लेवल ऑफ order level data should be in a order, that is excellent, good, average and poor. In my questionnaire I use the scale with order, both combination है. एक question में in which I ask the perception, how much rating you are going to give this webinar. 5 for excellent, 4 for very good, 3 for good, 2 for average and 1 for poor. So what I use, this is the combination of scale. Scale भी है यहाँ पे, क्योंकि scale है और एक order है. ठीक है. स्केल क्या है कि मैंने उस डेटा को 5 to 1 के स्केल में रखा. ठीक है. आप 5 to 9, 10 के स्केल में भी रख सकते हैं. इस स्केल पर हम जाएंगे ना, पूरा एक क्लास है स्केल वाला, बहुत लंबा चीज है, थोड़ा सा समझ. स्केल भी है क्योंकि मैंने इसको 5 to 1 के स्केल में रखा, प्लस मैंने एक ऑर्डर दिया. आई हैव गिवन द ऑर्डर आल्सो. excellent, good, excellent, very good, good and average and poor. So that question is
order level, where order is given. Properties क्या है? Data classification represent by set of label of names high, medium, low, excellent, good, average, poor, average, good, excellent. Is in this way you are giving some rating, some order you are making. अब nominal को order. Can you give me an example of how nominal data and ordinal data should be mixture? Mix of nominal and ordinal data. Students, are you there? Yes, ma'am. Quality of product. Quality? Quality of product. Quality of product. Okay. Can you elaborate more? I can take your example. You say quality product. So, what is here nominal? What is here ordinal? Which variable is a nominal data type and which is ordinal data type? Quality is nominal. Yes. Quality is nominal. Which is nominal? Quality. Quality. Yes, please tell me. Yes, quality. How it is nominal? Anyone और कोई बताएगा मुझे? Anyone, can you give me any example of picture of मतलब combination of nominal data and ordinal data? जिसमें दोनों आए, nominal भी है, ordinal है. एक variable nominal है और एक ordinal है. Okay, I will take the example of yours. ठीक है? Quality of products. ठीक है? Quality I can measure in a 3 way. Order 3. Excellent, good and average. और 4 ये same ले लेते हैं. ठीक है? Excellent, good, average and poor. So then product is product and excellent, good, average. Product is a nominal and the excellent, good, average, quality is a ordinal. Now, how product is nominal? For example, you are having a 4 sample of product. 4 sample of product. Sample 1, sample 2, sample 3 and sample 4. ठीक है? अब ये सैंपल जो है 1, 2, 3, 4 ऐसे मैंने इसको नाम दे दिया. अब नाम दे दो तभी आपका नॉमिनल डेटा बनेगा. आपके पास प्रोडक्ट है पेन. ठीक है? आपके पास प्रोडक्ट है पेंसिल. ठीक है? आपके पास प्रोडक्ट है इंक. एक आपके पास प्रोडक्ट है जेल पेन. एक आपके पास प्रोडक्ट, मैं एक ही नेचर वाला प्रोडक्ट ले रही हूँ. आपके पास प्रोडक्ट है जेल पेन, आपके पास प्रोडक्ट है इंक पेन, आपके पास प्रोडक्ट है बॉल पेन और आपके पास स्केच पेन. ऐसे आपके पास 4 पेन है. ठीक है? चारों पेन है. आपके पास स्केच पेन है, बॉल पेन है, इंक पेन है और जेल पेन है. ये पेन्स जो मैंने नाम दिया आपके, ये आपका बन गया नॉमिनल डेटा. आप उसको कैसे भी बोलो. ठीक है? मैं कभी बोल रही हूँ जेल पेन, कभी मैं बोल रही हूँ इंक पेन, कभी मैं बोल रही हूँ समटाइम आई एम सेइंग बॉल पेन, समटाइम आई एम सेइंग इट एज अ sketch pen. And I'm asking you name 4 types of pen. Somebody says that Gayatri says that blue pen, gel pen, ink pen, ball pen and sketch pen. So there is no order. Getting my point? Here the pen is a product and that is a nominal data. But simultaneously now I'm saying arrange this data in some order on the basis of its quality. ठीक है? अब क्या होगा? क्वालिटी क्या है यहाँ पे? एक्सलेंट, गुड एंड एवरेज एंड पुअर. या हम 3 क्वालिटी लेंगे, 4 कैटेगरी का पेन. ऐसे जरूरी नहीं है कि 4th पेन भी किसी कैटेगरी में आ जाएगा.
three categories I'm giving, three order: excellent, good, and average. Now I'm telling you these three types of pen. Now you can arrange it in the some order on the basis of quality of that pen. So आपने क्या किया? जेल पेन, excellent. तो आप यहाँ क्या हो गया? जेल पेन पहली, आपको जेल पेन को आपने ऑर्डर, आप पेन को आपने ऑर्डर दिया. Nominal data now arranges on the basis of its quality in some order. So then it is combination of nominal and ordinal data. Getting my point? Then you say कि after gel pen, ball pen is good. Then you give the grade to good to the ball pen. Then another, there is a ink pen. Ink pen is also good. So you give another rate to good, ink pen good. And use sketch pen. It is not frequently used. Sketch pen is only for drawing purpose. And when we write it, it take a large words, big words. We can't write properly. Writing point of view, you evaluate it. So you are giving ball pen poor, yeah, average. So here, product was earlier in a nominal. You can talk it, you can say it any form. But when I told you कि now arrange, give some order these products on the basis of its quality. And quality you have rated good, excellent, good, and average. Then what you did, you make the order of this. So nominal data is arranged, nominal become ordinal. So nominal become ordinal data. Understood? Yes, ma'am. Yes. Ordinal, I will go now little fast. 12 बज गए, फिर practical book आपको लेना है. Ordinal level data, the next highest level is data is ordinal level. Data is represented in some order. Ordinal data में हमेशा the data is always in some order. For example, rating of student performance show in the table. Properties क्या है? What are the properties? Data classification are represented by set of label names, high, medium, low, that have relatively value. Because of the relatively value, that the data classified can be ranked or ordered. That is classified. For example, I have given the question perception. What is your perception? How you rate the perception of the program in my morning questionnaire? That is, there is combination. Combination of what? Ordinal and scale. Interval. Third type of data level of measurement is interval data. और interval data में आपने देखा, that one data is जो purely interval data is, that is your age. Age एक scale बनाया है ना मैंने, एक interval दिया ना उसको 15 to 20 and 20 to 25. एक और ले सकती थी 25 and above, maybe if there is a post graduation students more than 25, but generally my population is student, so I assume that the maximum limit of the age will be 25. So I have given the range 15 school students, 15 to 20 and 20 to 25. 25 is a PG students. So in this way, I designed my questionnaire to understood my population. So interval data means that data which is called an integer, and data is measured, that is in the scale form. यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, in this range, in this range, in this range. Interval data, also called an integer, is defined as a data which data type which is measured along a scale in which each point is placed at equal distance from another. Equal distance. For example, you have seen that most of the statistician, most of the questionnaire designer make a mistake, silly mistake. What they will do, they will, if they have to design the scale, what they will do, they, for example, same questionnaire, age, what they will do, 15 to 20 and 20 to 25. When the person who fill the questionnaire, पहले वो सोच में बैठ जाएगा कि मैं नीचे वाले में स्केल में भरूं या ऊपर वाले स्केल में भरूं. समझ आ रहा है मेरा क्वेश्चन इशू? Getting my point? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Be active. Don't sleep.
नो वन कैन टीच दिस थिंग. बहुत ही इतना स्टैटिस्टिक्स जो बिल्कुल हार्ड कोर स्टैटिस्टिक्स है, वो कोई आपके टीचर भी क्लासरूम में जो जिनका स्टैटिस्टिकल सब्जेक्ट है वो भी ये नीचे पढ़ाएगा, क्योंकि आप लोग डेटा साइंस कर रहे हो, एनालिटिक्स कर रहे हो. दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. It is not only just appear for the statistical paper and get the marks and get the good score. Getting my point? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Interval level data. Yes, ma'am. कहाँ पे मिस्टेक करते हैं? At the time of defining the scale. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एज में क्या करते हैं? What they will do in the age, what they will do, they define the age 15 to 20 and 20 to 25. So people, the respondent get confused. कहाँ पे लगाऊं? टिक नीचे वाले में, इन अप ऑप्शन और डाउन ऑप्शन. ठीक है, सो फिर वो कुछ भी लगा देता है एंड देन बिकम अ डेटा बिकम अ गार्बेज, क्योंकि उसको समझ नहीं है. वो उसको तो क्या मतलब है? डेटा इज इंपॉर्टेंट फॉर द person who is going to analyze that thing. So make the scale properly. Interval scale mein, if you make the scale, it should be an equal interval. 15 to 20, then 21 to 25. अगर उसमें equal scale नहीं आ रहा तो आप 26 ले लो. ठीक है, 5-5 का स्केल, 5-5 का रेंज डिफरेंस, 10-10 का डिफरेंस, 6-6 का डिफरेंस, इस तरह से difference ले लो. That is called as an interval scale. Interval is also called integer, is defined as a data type which is measured along a scale in which each point is scale placed at an equal distance from one another. ठीक है, एक दूसरे के equal distance पर है. Interval data has very distinctive attribute and make it distinct in comparison with nominal data, ordinal data and ratio data. It is very distinct characters, different characteristics. बिल्कुल अलग सा different character है. इसलिए ये data comparative, अगर इसको comparison करें तो it make it very different from nominal data, ordinal data and ratio data. अभी मैं third, fourth type बताऊंगी ratio data. The example of interval data are temperatures, Celsius, Fahrenheit, marks grading, IQ test, CGPA, आपके CGPA marks होते हैं ना grading जो लगते हैं वो. These interval data example are measured with equal interval in their respective scale. Interval data are often used to statistical research, school grading. जैसे statistical research, मैंने age लिया, मैंने scale बना दिया, ए भरो. तो statistical research में मैंने use school grading, scientific studies and probability studies में there is a frequently used interval data. What are the properties of interval data? Data classification are ordered according to the amount of characteristic they possess. It is again ordered. Interval भी आप उल्टा पुल्टा नहीं बनाएंगे. आपने for example you make it 15 to 20, then नीचे, then below next scale will be 21 to 25 or 26, equal scale. Equal difference in the characteristics are represented by equal difference in the measurement. Understood interval level? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नीचे लिखते हैं PPT and अभी अब आपका आ जाएगा इंटरवल हो गया. Now ratio level data. Ratio पढ़ते ना, ratio analysis बहुत सालों में पढ़ा होगा ratio. ठीक है, रेशियो एनालिसिस ये है आपका मीनिंगफुल. ठीक है, ठीक है. रेशियो एनालिसिस, रेशियो द डेटा शुड बी इन अ रेशियो. ठीक है, कुछ भी मतलब रेशियो में आया, फ्रैक्शन में आ गया, रेशियो इज फ्रैक्शन. The qualitative data is recorded on a ratio level measurement. The ratio level is the highest level of measurement. बहुत highest level है, बहुत ही complicated data set में ये use होता है ratio level. ठीक है, it has all the characteristics. इसमें सभी characteristics है. Interval level के सारे characteristics, लेकिन इसमें zero का significance, zero का meaning है. मैंने जैसे आपको बोला how many children are at your home, आप क्या बोलोगे ज्यादा से ज्यादा? 4 या बोलोगे कोई नहीं? तो जो कोई नहीं है ना, मतलब जीरो है ना, उसका वैल्यू है, वो भी काउंट है, एनालिसिस का पार्ट है. वी कांट इग्नोर द जीरो.
Getting my point? The 0 point is meaningful and the ratio between two numbers are meaningful. Example of the ratio scale of measurement include wages, unit of production, weight, changes in stock price, distance between branch office और height of the student, height of my height. ये जो डेटा है ये सारा डेटा टाइप आप जब हाइट निकालते हो दैट इज कम अंडर द रेशियो लेवल डेटा. प्रॉपर्टीज क्या है? डेटा क्लासिफिकेशन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द अमाउंट कैरेक्टरिस्टिक्स दे प्रोसेस. ठीक है, क्लासिफिकेशन है ऑर्डर फॉर्म में, ऑर्डरली अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर. Equal difference in the characteristics are represented by equal difference in the number assigned to the classification. डिफरेंस जो भी क्लासिफिकेशन आप डिफाइन करोगे उनके बीच में एक इक्वल डिफरेंस है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये है द 0 पॉइंट्स इफ द कैरेक्टरिस्टिक एंड द रेशियो बिटवीन नंबर इज मीनिंगफुल. 0 भी एक कैरेक्टर है और देयर रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज आल्सो meaningful. If you say what how many money is in your pocket in your pocket right now and you say nil, nothing, so that nothing is denoted as 0. That is also part of data. So how many level of measurement we have studies. अब आपको ये एक तो लेवल पता होना चाहिए और कौन सा डेटा किस लेवल पे है ये एग्जाम्पल पता होना चाहिए. नॉमिनल कोई ऑर्डर नहीं है, किसी भी वे में आप बोलो. ऑर्डिनल ऑर्डर है. स्केल टाइप है. स्केल में एग्जांपल जहां पे आप स्केल देते हो स्लैब्स में देते हो, जैसे इनकम टैक्स का स्लैब है, इतने से इतनी सैलरी है तो इतना टैक्स पे करना है. इफ यू आर हैविंग a salary in between this range you have to pay this much tax. If you have to pay, if your salary is in this much, that this much to this much you have to pay. Yes, ma'am. ठीक है, where scale comes. ठीक है, and ratio means unit of production, weight, stock price, distance between my home to college. meters में आप बोलते हो, किलोमीटर्स में बोलते हो. 22 किलोमीटर डिस्टेंस नोएडा टू ग्रेटर नोएडा, तो 22 किलोमीटर्स मीन्स रेशियो. Got it, my good? So level of measurement 3. अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगी जो वही मैंने शुरू में कहा कि बहुत अच्छे स्टैटिस्टिशियंस रिसर्चर को नहीं आता कि कौन सा परमिशेबल स्टैटिस्टिकल टूल किसके लिए लगाना है. तो ये चार्ट देखो, प्राइमरी स्केल ऑफ मेजरमेंट है. आप देखोगे मैंने 4 प्राइमरी डेटा टाइप लिए हैं. I have taken 4 different data types. One is nominal, ordinal, interval, ratio. ठीक है, फिर हमने बेसिक कैरेक्टर्स, नंबर, आइडेंटिफायर, क्लासिफायर ऑब्जेक्ट्स. नंबर इंडिकेट रिलेटिवली पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, नॉट अ मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन देम. ये थोड़ा सा ना आप सिंपल इसमें समझ कर लो. ऑर्डिनल मीन्स nominal means the nominal data type which is without any order but it is in a qualitative manner. Ordinal means order type data which is order, ranking. You can give the rank. ठीक है, some series. For example, nominal को आपको ordinal में करना है. There are 6 girls. ठीक है, I am saying the name of the girls. आप immediately दे रहे हो नेहा, सीमा, गीता, गायत्री, some other girl, अंकिता बोल दिया. ठीक है, यहाँ नेम ऑफ द गर्ल्स बन गया नॉमिनल डेटा. नाउ आई एम सेइंग these girls arrange as per their height, highest to lowest. अब देखते अंकिता बहुत टॉल है, फर्स्ट पोजीशन अंकिता, देन गायत्री, देन नेहा, देन सीमा, देन अनदर गर्ल, सम अदर गर्ल. तो आपने क्या कर दिया, नॉमिनल डेटा को ऑर्डिनल कर दिया. अब वो ऑर्डिनल बन गया. तो नॉमिनल इनिशियली इट वाज नॉमिनल बट व्हेन यू arrange that girls sequence line according to their height that and highest to level the data become ordinal. Interval data, टेम्परेचर है, इंटरवल है, एज है, स्केल है, इंटरवल में जो है स्लैब्स है, आपके सैलरी स्लैब्स है, टैक्स स्लैब्स है. इंटरवल रेशियो, लेंथ, वेट, डिस्टेंस, मीटर्स, मेजरमेंट, किलोमीटर्स, ये आपका रेशियो है. ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दी है.
जेंडर, क्लासिफिकेशन, ब्रांड नंबर, ये ठीक है, इसको करो। ये पुराने टाइम में इस तरह से लिखा जाता था, अभी आजकल जेंडर लिखते हैं हम लोग, ठीक है। जेंडर, क्लासिफिकेशन, रैंकिंग, एटीट्यूड, इंटरवल में एटीट्यूड, ओपिनियन, इंडेक्स। जैसे इंटरवल में मैंने एटीट्यूड ओपिनियन पूछा आपको, विच वाज द इंटरवल क्वेश्चन, एज वाज द इंटरवल क्वेश्चन एंड अनदर वाज द परसेप्शन। रैंकिंग, ठीक है, स्केल, ठीक है, 5 to 1 की स्केल में मैंने बोला, दैट इज द ओपिनियन। एटीट्यूड कैसे आप मेजर करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्केल। एंड फिर रेशियो, एज, एज अगर होल नंबर ले रहे हो, नॉट अ रेंज, अगर रेंज में ले रहे हो तो देन इट बिकम अ इंटरवल डेटा। जो मैंने क्वेश्चनर में दिया, आई हैव गिवन द एज इन द क्वेश्चनर, दैट इज अ इंटरवल डेटा, बट आई जस्ट आस्क द एज एंड यू आर राइटिंग द होल नंबर 22, 15, देन इट बिकम अ रेशियो। ये चीज आपको समझ। इनकम, फॉर इफ इट इज नॉट इन द स्लैब्स, इट इज अ होल इनकम, माय इनकम इज 1 lakh, 10 lakh, so that is ratio. Cost of products, sales, total sales of product of month of May, month of April, market share, that is ratio. अब ये सारा डेटा टाइप है। अब यहाँ पे परमिशेबल स्टैटिस्टिक, कौन से स्टैटिस्टिकल टूल कहाँ पे लगते हैं? नॉमिनल डेटा पर आप परसेंटेज लगा लो, मोड लगा लो, काई स्क्वायर टेस्ट लगा दो। 3 टेस्ट लगेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट। 3 तरह के स्टैटिस्टिकल टूल आपके नॉमिनल डेटा पर लगेंगे। क्या क्या लगेगा? परसेंटेज, मोड, काई स्क्वायर। हाँ, ऑर्डिनल डेटा पर आपका परसेंटेज, मीडियन, रैंक, कोरिलेशन एंड फ्रेडमैन एनोवा, एनोवा बोलते हैं, एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ये स्टैटिस्टिकल टूल है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ये स्टैटिस्टिकल टूल आपका ऑर्डिनल डेटा पर लगेगा। इंटरवल डेटा पर क्या लगेगा आपका? रेंज, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, प्रोडक्ट मूवमेंट, कोरिलेशन, टी टेस्ट, एनोवा, रिग्रेशन एनालिसिस। When you are having an interval data, when you are having a ratio data, then in geometrical mean, all ratio पर all आगे वाला ऊपर का भी कोई भी लग सकता है, कोई और भी लग सकता है, और खासकर geometrical mean आपका ratio। So ये नहीं है कि कोई भी any one test you can take and apply to any type of data. First of all, you have to understand the nature, level of data. And then on the basis of level of data, you can find out the test. ये मैंने इसका ना ग्राफ बनाया है, ट्री बनाई है। प्राइमरी स्केल नंबर, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, और फिर उसके बाद परमिशेबल स्टैटिस्टिक्स। कौन कौन से स्टैटिस्टिकल इसमें लगेंगे? ऑर्डिनल पे परसेंटाइल मीडिया, क्वालिटी, रैंकिंग टीम, मार्केट पोजीशन है, उस पे किस तरह से ऑर्डर, परसेंटाइल और उसके कॉमन एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है। और इंटरवल डेटा पर मीन, रेंज, स्टैंडर्ड डिविएशन, कॉमन एग्जांपल टेम्परेचर्स है, एटीट्यूड है। रेंज में एटीट्यूड अभी मैंने बताया ना, ओपिनियन, परसेप्शन, व्हाट इज योर परसेप्शन रिगार्डिंग द क्लास, how to rank the class, that is your opinion, that is your perception, and how it is measured, it measure on the scale। and क्या लग सकता है वहां पे? परसेप्शन पे मीन लगाएंगे हम, रेंज लगा सकते हैं और स्टैंडर्ड डिविएशन लगा सकते हैं, ठीक है। और रेशियो में ज्योमेट्रिकल मीन, कॉमन एग्जांपल, लेंथ, वेट एंड स्केल। तो ये जो है मोस्ट ऑफ द स्टैटिस्टिशियन, जो अच्छे स्टैटिस्टिशियन होते हैं वो तो ये गलती नहीं करते, लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, वो सबसे ज्यादा ये गलती करते हैं, क्योंकि मीन, नॉमिनल डेटा पर मीन लगा देते हैं, वहीं पे गड़बड़ हो गई। गेटिंग माय पॉइंट? ऑर्डिनल डेटा पर मीन लगा देते हैं। अब टेस्ट भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ टेस्ट के कुछ नाम लिए मैंने। एक लिया काई स्क्वायर टेस्ट, ये टेस्ट है। ये एनोवा भी एक टेस्ट है। टी टेस्ट है। टी टेस्ट आपका इंटरवल डेटा पर लगता है, वो लगा देते हैं नॉमिनल डेटा पर टी टेस्ट को। हो गया पूरा, डेटा इज रॉन्ग। डेटा क्या रॉन्ग? द रिजल्ट्स आर रॉन्ग, कंप्लीट फंक्शनिंग इज रॉन्ग। Yes, ma'am. Got it? Regression लगाना है आपको, you have to apply the regression analysis, but the data should be interval data. And people, what they do, they apply the regression data on the nominal data. Yes, ma'am.
all things are over. Yes, sir. परसेंटेज नॉमिनल डेटा पे जब आपको नॉमिनल निकालना ना परसेंटेज लगा सकते हैं. हाउ मेनी गर्ल्स आर इन क्लास? 20% गर्ल्स. हाउ मेनी बॉयज आर 80% बॉयज, है ना. इस तरह से लगा सकते हैं परसेंटेज है नॉमिनल डेटा. बट और परसेंटाइल आपका यहाँ पे ये परसेंटाइल क्वार्टाइल परसेंटाइल एक है, वो मैंने सिलेबस में बहुत लंबा है, दैट इज वेरी वास्ट. मतलब वी हैव टू क्वार्टाइल परसेंटाइल सब एक्सप्लेन करने के लिए जो मेजर स्टैटिस्टिकल टूल है दैट आई एम गोइंग टू टेक. गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We are very clear. क्लियर हो? Yes, ma'am. ma'am. हाँ मैम. Yes, ma'am. एंजॉय किया? Yes, ma'am. लर्न किया? Yes, ma'am. हाँ मैम. लो अब क्या लिखा? Break time. और नाउ ये टाइम है 11:58, तो 12:10 तक आ जाओ. Okay, thank you, ma'am. Okay, ma'am. This is 11:58 to 12:10. 10. So everybody should, अब इसके बाद प्रैक्टिकल शुरू होगा. ठीक है. जो मैंने आपको क्वेश्चनेयर दिया, ये दिया, वो सब उसको हम एनालिसिस करेंगे थोड़ा थोड़ा. ये सारे मीन कैसे निकालते. देखो मेरा अभी यहाँ पे पर्पस ये नहीं कि आई एम नॉट इन दिस बॉदर अबाउट द सॉफ्टवेयर कि मैं किसमें आपको बता रही हूँ. मेरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि सॉफ्टवेयर अगर आपसे कॉन्सेप्ट इज सेम, you use anything, you use Python, you use standard software SPSS, you use eView, you use Excel, whatever the available is, statistical analytical softwares are available, you can use anything. Whatever the answer you will get through SPSS, same answer you will get through Python or you are through Excel. ठीक है. The important thing is the concept should be clear. I'm just going to, why I am taking SPSS here, but I just want to give you exposure of standard software. Python is open source, R is open source, both are command oriented, coding is there, but SPSS is the software which is Excel and Python, Excel and SPSS both are the standard software. Means that is not an open source. You have to pay and buy that. But I just want to give the exposure. But importance is that when software gives the result to you, how you are going to analyze it. Analysis is important. Got it? Yes, ma'am. Go for 12:10 को बराबर सब आ जाना. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.
Ma'am, are you there? Yeah, I'm here. Yes. Ma'am, actually, I'm currently doing like research work on natural language Yeah, processing. I heard your message. Yes, what you want to say? Yeah, I wanted to know if we can organize like some kind of webinar session. If I could do it, I think it would be useful and informative for this my classmates. Okay, but presently I will not permit. Can we announce at the end of last session? Yeah, sure, definitely. That time you can announce. Oh, okay, sure, ma'am. Hello. Hello, ma'am. Are you there? Yeah, I'm here. Please tell me. Have you given assignment questions today? I'm giving the assignment question of Python so that you should go for Ma'am, I have practice. not received it. So No, if I you have can not give. given. See, that yet I have not given. Actually, most of the students is not receiving the mails. Maybe because of bulk mailing is going on. Na? So I will Okay. create one Google Drive, Okay. and I provide the link on here on WhatsApp group. Okay. You can access that link and you take any notes, assignment, PPT. I will by the evening I will put it all material on that link. Okay. Okay, ma'am. Okay. So Thank you you very people much. can easily access, download it. Don't delete, but download. Do that Okay, ma'am. Okay. Thank you because very through much. mail, na, what happened? Many of student has complained that I have not received mail. Yeah, Maybe yeah. I'm sending the bulk mailing due to that reason. Students are not receiving. So today's session, everybody understood or not? Yeah. We understood, ma'am. It was a good session. I'm very interested in this type of research, means and data. I like to play with data. Yeah. I also. 2 minutes left, then we'll start. Ma'am, do we have exploratory data analysis with Python in this course? Yeah, I will see what Manjula ma'am will take. What is in her course content? Okay. So that is a very beneficial thing Huh. which can be helped. She will definitely cover some important part through Python. Yeah. As for me, this is a revisionary course, but Okay. still I am doing it because revision is very much necessary. Hmm. I will take the descriptive analysis here. How to find out the frequency, how to do the analysis, how to Okay. find out the through. I will take the descriptive analysis through SPSS. Okay, ma'am. Okay. I was planning, okay, I will take through R. No, better you take it with Python. R is even Huh, more difficult. Python through Python, madam will take. She's very good in that. Okay, so for that you can take it in R. Then if she's taking in Python, then you can take She's it in R. taking in Python, and Okay. no, I thought I will take them, but in R there is a lot of coding. If for finding one mistake, take a time. It's time consuming. Here my purpose is only to give a fundamentals of statistics.
Okay, okay. If you So that is okay with the SPSS. that is okay with the SPSS. Yeah, because it's the same like Excel, just the user interface changes. Yes. And it is a standard software. You if you download it. Yeah, I did it. I'm working also on it, so it's not a matter for me. What you are doing? What is your name? My name is Deep. Deep. What you are doing? Means I'm a junior data analyst in integrated resources. So Okay. I play with Tableau, Power BI, Python. You are not a student. No, means I'm not a student. I'm a student. I'm a postgraduate student. Where? At MIT World Peace University. Okay. MIT. Post graduation in which year? MCA. Okay, you are doing MCA. Okay. Yeah, I have done my I have done my data science certification in. You talked one day. You talk it's one minute. The recording is going on. I will pause the recording. I'd never think that. Okay, no. Okay. So after break, now we'll go for a source of data. Now understand. Now here is the important. We understood types of data. We understood we understood the type of statistics, and then we have understood what are the level of data. We understood the ordinal data, interval data, then nominal data first, nominal data, there is lower level type of data, nominal, ordinal, scale and ratio. So now question is, because we are the data analytics, we in future we are going to become a data scientist. If you want to go more beyond, then you go for a data science. Otherwise, you will work on data analytics also. That is also very good post data analytics. And you want to enter more in coding or that, then you will enter into the data science. That is machine learning. So first of all, the source of data, and in which we can first of all understand the source of data and types of data. See, we are having two types of data. One is primary data, another is a secondary data. We collect the data from various sources, and the nature of the data, it is in a primary data collection and another is a secondary data collection. First of all, we can understand the primary data collection and then secondary data collection. Primary data collection, it is a collection through survey. In morning, I have given one questionnaire. I have given few questions, few things I want. That information I want, I have provided the questionnaire, and that is called as a survey. I conduct it is a small survey. I provide the questionnaire, and in questionnaire there was some questions related to my object. My objective was my problem statement. My problem statement is to identify the perception of students. What is the perception of their, now we'll analyze that data. What is the perception? I will not get presently conclude. I only define the problem statement. My problem statement is to identify the perception of the students about this program. Another way, we collect the data through interview. You take the interview, you note down that interview is a qualitative form, you ask certain question to the interviewers, and then as an analytics, as a statisticians, you convert that points into the quantitative form. That is another method of collection of data, and that is called as a primary data, and that is also called as a first-hand data. Means you collect, you are collecting. You through questionnaire, through interview, and then you through interview, the data you have collected, you convert it into the quantitative form and then apply the statistical tool. Then get the results. That is a primary data technique. And when you collect the primary data, it is raw and meaningless. Just you collect it right now. You will not come into the conclusion. We will analyze now data, then we come into the conclusion. Then secondary data. That is, it is a published and compiled form. Whatever the data is published in newspaper, I have given some examples of population, railway, COVID, whatever you read in that is published, that is secondary data. For example, GDPI of a country, last 2 years, last financial years, what is the GDP of India?
That is, people use that secondary data also for researcher use for further analysis purpose. It will get through newspaper, magazines, books, or website. That is a published form. So data source is primary data source and secondary data source. So what is the next step when you collected the data? You have to follow to D2D process, data to decision process. So what you will do, you collect the data, that is data is scattered, raw, meaningless. What you will do next you arrange it, that is a process, and apply some statistical tool. You organize, then apply the statistical tool. With the help of that statistical tool, you generate some information. When your information, that information is in the form of output, result, and then what will be next? Then you read that, you analyze that. What is that result? And then what you will do? You take the decision. This is the data to analytical process, from data to data. But meanwhile, there is when you are in analysis phase, you want to go more in depth, more in insight of that data. Then you enter into the data science. And what is data science? There are more things. In data science, there is a lot of statistical, mathematical combination of these. There are some algorithms, and with the help of programming language, some language is used and make algorithms. And what happened? The analysis which was earlier done by analyst, that now analysis is done by machine. Machine understand the things and then provide the relevant information to the end user, and machine will take the decision. Through decisions, machine decide. So the process starts from data to decision. From data to decision, statistics, you asked that time, Mr. Upadhyay, Rakesh Upadhyay, the speaker, our speaker, he was from New Zealand. You asked, many of you asked, sir, there's a requirement of statistics for data science? Yes. Yes, there is a requirement of, statistics. Some noise is disturbing. Yeah, I will mute. Yes, there is a requirement of this statistics when you go for a data analysis, because for data science you cross these phases. You cross the phase data collection, arrangement, process. Without data statistical tool, process is impossible. Then information, then analysis. You want more in depth, so you enter into the data science. You never analyze, you want machine should analyze and take the decision, then you go for a machine learning. So for a complete process, you should require statistical as well as mathematical knowledge and plus programming knowledge. When you go for a data science, it is combination of all: mathematical tool, statistical tool, and programming language. To developing the algorithm, machine learning algorithm, you need a programming. You should know the programs. Got it? Any doubt here? Any doubt? No, ma'am. This is the journey from data to information. I just make this. You collect the data from various sources. Then technical people, create a data house, organize, summarize, standardize. Then data warehouse is built, and then analytical people use it. Then analyze the data, apply the statistical tool, send to the manager. They make, on the basis of that information, they take the decision, make the strategy of the companies, make the, we can say, norms of the companies, and then provide that strategy to the end users through browser, portal, dashboard. And this is a full business intelligent BI technique of data to information. Through this diagram we can understand. Now, okay. So data science and process of data science little bit we can understand. Then we go for a practical part.
Data science is a mixture of various advanced statistical and mathematical tools, computing algorithm, machine learning principles, and protocols with the goal to discover a hidden pattern of the raw data. Say, on the basis of a simple analytics, we can understand, we can process the data, we can get some results. But if you go to more in deep, more insight of that data, and you are not satisfied with one or two pattern, you want, there should be some hundreds of pattern, there should be many pattern, thousands of pattern, that in that case you enter into the data science. The data is a collection from various sources. It should be fulfill the characteristic of 3 V's: velocity, variety, and volume of big data. Okay, just I want to give the data science, so that you should be understand, is statistics required for data science? Yes, but advanced statistical tool, apart from that, there's a much more. You should know the mathematical tool also, computational tool also, machine learning principles also. So then you become a perfect data science. And it is not immediately one day you study, and practice make you perfect. Okay. So you will see that where in this process data science analysis required. Business processes, daily business processes generate a huge data, and that data is supplied to the analysis purpose. That data should be analyzed. Data should be organized. Data should be data should be arranged. That data should be make a meaningful form. The meaningful form is the information, and then business manager, analytics, the senior person of the organization, they analyze the data and take the decision. This is one part which is generally followed in the organization. But when the organization they want more insight from that data, they enter into the data science part. And data science part, but after analysis, after covering across the analysis, if organization or analytics is not satisfied with the 2 or 3 pattern got, they want more and more thing they want from the data, then they enter into the data science. And data science what is data science? Machine learning algorithms to produce artificial intelligence systems. Then when this is fulfilled, machine algorithms are developed and produce artificial intelligence in a machine. That means analytical role is now performed by machine. And analyst will only analyze few pattern, but machine learning, through machine learning, many patterns should be discovered. And when many machine learning and to produce an artificial system, that process is over, what will be happen? Generate the insight. In-depth knowledge will be produced, and that pass to the business users, apply in the organization for future course of action like planning and decision. Here is also till analysis, again the same thing is possible, but in narrow manner. But machine data science, when you will get more and more in-depth knowledge about that data, that means you will get the different variety, different patterns, and it will be helpful for the organization for future course of action. This is the difference between data science and data analytics. Data analytics process is one, and you want to go more in detail, more in advance, then you go for a data science. Understood this? Yes, ma'am. Yes. Now, I will minimize this. First of all, I will download my questionnaire, which I have shared with you. My screen is visible to you, everybody? Yes, ma'am. Now, we'll go for some little practical oriented. See, this is my email, and I have get the response, 127 response of that questionnaire. This is the primary data. ये देखो, मैं आप लोगों को मैं पहले भी डाउनलोड कर सकती थी, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि 120 रेस्पॉन्स मिला है, और मैं इसको
डाउनलोड कर रही हूँ .csv फाइल। ठीक है, ये मैंने डाउनलोड कर दिया इसको, एक मिनट, डाउनलोड हो गया ये, एंड आई विल टेक इट इन माय डेस्कटॉप। सब मेरा प्रोसेस दिख रहा है आपको, व्हाट आई एम डूइंग? Yes, ma'am. हाँ, एवरीथिंग। हाँ, अब मैं इसको, इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करती हूँ। दिस इज एक्सट्रैक्टेड। कहाँ चला गया इसका ये यहाँ पर सेक्शन यहाँ पे आ गया। ये दिस इज द फाइल एंड दिस इज योर प्राइमरी डेटा सेट। ये क्यों नहीं ओपन हो रहा है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? एक मिनट, आई विल चेक अगेन। The error is caused with description error can't display because it is long. Okay, एक minute, copy different folder. Copy. I'll just get rename it. Rename data set. Data set. I will check now if it will open or not. Yes. आपको दिख रहा है? Have you this file is visible for you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये आपका response है, isn't it? Yes, ma'am. ठीक है, this is your response. So I don't require this time and date. I will remove this column. अभी टाइमिंग तो मैं तो रिमूव कर रही हूँ। Delete the column. ठीक है, and now gender, age group, education, and then this हो गया how to rate this and this. ठीक है, see now this is the questionnaire you that is filled by you people. ठीक है, I will make one column so that I can understand. I will make the one column insert column. I will give a student code, ST code. ठीक है, something, see it is anonymous data because here is nothing, name or nothing. Just I will show this for information. I don't know who has filled first, second, third. But whenever you take the some survey, generally we don't need a name, requirement of name, and we don't requirement any identification of that person. Okay, so I will for my purpose, my understandable purpose, I will give the code for this. I will go give the code. For example, student 1, student 2, this manner, S1, S2. डोंट मेक नॉइज। अब यहाँ से आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, मैं एनालिसिस बता रही हूँ आप लोगों को। अभी तक आपको मैंने थ्योरी बताया। ये प्राइमरी डेटा आपका है, द सोर्स आई हैव कलेक्टेड 120 रेस्पॉन्स आई रिसीव्ड। ठीक है, अब जब मैं मॉड्यूल 3 पढ़ाऊंगी, दैट इज अ स्प्रेडशीट, एंड नाउअडेज इन एवरी फील्ड, इंजीनियर हो, मैनेजमेंट का हो, स्प्रेडशीट यूज है, एक्सेल का यूज है। आप लोगों को लगता है कि एक्सेल बस वो डेटा, एक्सेल में डेटा, ये एक्सेल शीट है और इसमें डेटा वगैरह फिल कर दे एंड दैट इज ओके। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें। हेलो मैम, even in USA this all is used still now. Yeah, they use Excel only. In India, say when you go for any company, when you completion of your graduation, first question interviewer asks you, do you know Excel? You may be anyone. You may be a software developer, BTech student. You may be any MBA student. You may be any student. So purposefully in the module 3, we have given the advanced Excel. You will not only study how to enter the data. There are many things in attend that module also. Everybody should be present in Excel module also, because today's industrial demand is you should know the Excel. Okay, so I will fill this PG. See, what I am doing, I collect the data and it is in unorganized manner. So I am making my data as per the computer software understandable form. So getting my point?
So what thing I'm doing? I'm making my data Yes, software understandable form. right, right, Getting my point? right, right. So okay, ठीक है. So see, when you will go for first example, a student code. So I use s underscore. Underscore we can use for the variable name in SPSS, Excel, any type, even in Python also. Then gender, then age group. So there should not be a gap in age group. Please don't talk. Some noise is disturbing us. I don't know student why they are not understanding, why they are not mute themselves. Guys, please pay attention. This is very important. Mute. Don't talk anybody. Age group, so I make the variable properly. Then education, there is a colon. I don't require this colon because colon is not preferable. So now say for question ID, how do you rate the school 1 to 5 scale? I use this much variable name for the in the software, it give the error, it will not take. So I will change this. I will take it as their perception. I will take the variable student as perception. I will make like this as underscore perception. Okay. And one thing I did mistake. I should scale up, but I have given 4 to 5 here again. So I have to remove this. 4 is ये मुझे हटाना पड़ेगा. अब ये बहुत बड़ा एक काम पड़ गया. ये इस तरह का वो एक्सेप्ट नहीं करेगा. मुझे ये अपने पास रखना है लिखकर अलग सेपरेटली कि व्हाट इज, ये चेंजेस करने पड़ेंगे एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा. 1 मिनट, आई विल फाइंड कर सकती हूँ मैं इसको. कोलन फाइंड, क्या फाइंड करना है? 3 dash good and replace it with good. Replace it with good. देखो मैं कैसे कर रही हूँ ये चीज, आप लोगों को दिखा रही हूँ कि फर्स्ट हैंड डेटा को हाउ वी कैन मेक अ सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंडेबल. कैसे इसको रेडी कर रहे हैं हम सॉफ्टवेयर के लिए, एनालिसिस के लिए. फर्स्ट हैंड डेटा, रिप्लेस ऑल. तो ये रिप्लेस ऑल हो गया. एंड वेरी गुड है 4 इज वेरी गुड, वेरी स्पेस गुड. एंड इसको वी कैन मेक ए वेरी गुड. 4 हटाना ना आपको. रिप्लेस ऑल, इसमें कुछ इसने गड़बड़ कर दी. देयर इज सम स्पेस बिटवीन दिस. Okay, replace all, and now 4 is gone. Now 5 dash, then 5 is excellent. 5 dash excellent, EXCELL, excellent, and replace it with excellent. EXCELLENT, excellent. Replace all. Anything left? Poor may be left. Poor, average 2 space average. AVERAGE, average is replaced with average. ओके, देन एनी पुअर है क्या? कोई पुअर, किसी ने पुअर दिया है मार्क, किसी ने पुअर नहीं दिया है. एक ने, किसने दिया है पुअर? 1 2 3 लोगों ने पुअर दिया है. तो 1 इज पुअर. ये परसेप्शन है, हो सकता है किसी को अच्छा लग रहा है तो किसी को अच्छा नहीं लग रहा है. तो पुअर को रिप्लेस करेंगे पुअर से. पुअर, ठीक है.
रिप्लेस ऑल, ये थोड़ा सा कुछ हो गया गड़बड़, ये ज्यादा स्पेस हो गई शायद, डिलीट पुअर वन डैश पुअर रिप्लेस ऑल, तो ये हमारा रिप्लेसमेंट हो गया। नाउ ये दिस रेडी डेटा इज आल्सो रेडी फॉर द सॉफ्टवेयर। अब ये आर यू कंटिन्यू टू अटेंड, तो बेबी यस यस, कितना रिजल्ट हमें निकलता है ऐसे, नो, एक ने किसी ने नो लिखा है तो मैं इसको भूल गया होगा तो उसको मैं कुछ यस कर देती हूँ खुद ही, यस एक आदि ये, तो आर यू प्लान टू अटेंड, इसको एक वेरिएबल बना देती हूँ, कंटिन्यू टू अटेंड, यस प्लान कंटिन्यू कर देती है, CON 8 10, तो ये मेरी एक फाइल बन गई। नाउ इट इज रेडी फॉर SPSS पॉइंट ऑफ व्यू। अभी भी SPSS में भी मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा, इसको तामझाम, ठीक है। मैं इसका एक्सेल, जब मैं मॉड्यूल 3 पढ़ाऊंगी, इसका एक्सेल में कैसे एनालिसिस करना है ये मैं तब बताऊंगी, अभी बताऊंगी तो फिर वो मेरा उस टाइम का मॉड्यूल का वो खत्म हो जाएगा, मतलब 4, ठीक है। इसमें इसलिए मैं आज आपको इसको SPSS में बताऊंगी, और ये चीज आपको R में भी बता सकते हैं, ये चीज आपको पाइथन में भी हो सकता है, ठीक है। तो इफ आई विल गेट टाइम आई विल शो इन R ऑल्सो। अभी तो R वैसे हमारे पार्ट नहीं है मॉड्यूल का, लेकिन अभी मैं बताती हूँ, ठीक है। ये .cs की फाइल है, इसको मैं सेव कर लेती हूँ, सेव एक्सेल फाइल, ठीक है। एंड एक्सेल फाइल को आई विल गिव द माई डेटा सेट नाम दे देती हूँ, माई डेटा डेमो, और इसको डेस्कटॉप पर ही मैं सेव करती हूँ ताकि ये सेव हो जाए, ठीक है। अंडरस्टूड? Got it? So I'm going to close this Excel file now. ठीक है, ये सारा क्लोज हो गया। एंड PPT आपकी है विजिबल? PPT दिख रही है आपको? Yes, ma'am. देखो स्टूडेंट्स, डेटा एनालिटिक्स और सम डेटा साइंस जो है मैडम लेंगे, मंजुला मैम, शी इज एक्सपर्ट इन दैट विथ पाइथन, ठीक है। बट बिफोर दैट यू शुड बी clear in the concepts. But if you show, she will show how to calculate the mean. She will show how to calculate the regression, how to calculate the correlation analysis, how to calculate the mode, median या standard deviation. तो वो तो calculate करके बता देगी. But what is the analysis? What is the interpretation? That is the purpose of this class. What I'm going to teaching here. So, but demonstration point, I will give you familiar. I will familiar you with the SPSS also. And ये इसलिए मैंने SPSS लिया है कि it is a standard software. आपको demo version मैंने आपको कहा था, you can download the demo version. This is the package which you have to buy. ये ओपन सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ का जो अभी का पर्पस ये है कि आपको जो रिजल्ट्स आते हैं, व्हाटएवर द रिजल्ट यू विल गेट, उसको आप क्या रीड करोगे। आप एक क्वेश्चन को मीन, आप उसका मीन कैलकुलेट कर रहे हो, तो मीन का जो रिजल्ट है, दैट रिजल्ट विल गिव द SPSS सेम, R सेम, पाइथन सेम, एक्सेल सेम, any data type, any data analytical software you can use, the mean value will be same, ठीक है। उसमें कोई चेंज नहीं, खाली प्लेटफॉर्म इज चेंज। So today I'm going to familiar with you platform, and I am not my purpose is not giving to exposure of you SPSS. My purpose is here how you are going to interpret. हमने data set collect किया, we collect the data set. First I show you primary data set, how to collect the primary, then how to make that data set ready for the software point of view. And same in R and in Python, we same .csv file we can export, and this data set will come in front of us, Python or R screen. ठीक है? So first of all, you should be know
I'm going to give us little exposure about the SPSS. SPSS is the software. It is a package, and full form is Statistical Package for Social Science. नाम इसका Social Science है, लेकिन ये कोई भी यूज करता है. इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी यूज करते हैं, मैनेजमेंट के स्टूडेंट तो कुछ ज्यादा यूज करते हैं, और सोशल साइंस के और ज्यादा यूज करते हैं. तो ये सॉफ्टवेयर ये है, इसलिए फ्रीक्वेंटली ये यूज इसलिए नहीं है क्योंकि ये रेडीमेड सॉफ्टवेयर है. आपको अगर इसका जेन्युइन रीजन, जैसे आपको विंडोज खरीदना पड़ता है, सेम वे यू हैव टू परचेज द एसपीएसएस एंड इट इज वेरी कॉस्टली, बट इट इज यूज फॉर द एनालिटिकल पर्पस. यू विल गेट द स्टूडेंट वर्जन. आपको स्टूडेंट वर्जन मिल जाता है, बुक के साथ मिल जाता है, सीडीज के साथ मिल जाता है. ये जो मेरे पास एसपीएसएस है, इट इज अ स्टूडेंट वर्जन एंड आई गॉट दिस वर्जन. 23rd वर्जन है एसपीएसएस का थ्रू वन ऑफ माई बुक. I purchased a data analysis book. उसके साथ एक सीडी थी, that was the SPSS student version. तो जितना आपको स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, that is sufficient. जितना आपको पढ़ना है, एनालिसिस करना है. बट अगर आपको प्रोफेशनली लेना है, कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से, डेटा एनालिस्ट प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, देन यू हैव टू, दिस सॉफ्टवेयर इज गिवन बाय आईबीएम. तो आपको आईबीएम से ये परचेज करना पड़ेगा. और उसको फील करने के लिए मैंने आपसे कहा था कि यू कैन ओपन द ट्रायल वर्जन. ठीक है. So SPS is a software capable to conduct just the about any type of data analysis used in social science, natural science or in a business world. फीचर्स क्या है? डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर है, इनबिल्ट स्टैटिस्टिकल टूल है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड यूज फॉर रिसर्च वर्क. ठीक है. And origin of SPSS, the software originally created 3 graduate students, late 1916 USA. Popular of SPSS, फिर SPSS and now predictive analytical software. पहले ये SPSS Statistical Product and Service Solution, Statistical Package for Social Science, SPSS, and then now it is popular as a predictive analytical software. ठीक है. And what is the necessary skill you want? The conducting the data analysis of SPSS researcher should be clear knowledge of statistics. कोई भी, whenever you go for a Python or SPSS Excel and you want a data analysis, there should be a clear knowledge about statistics and general acquaintance, general knowledge of computer. अगर कंप्यूटर एक्सपर्ट आप नहीं भी है, लेकिन आपको स्टैटिस्टिकल एक्सपर्ट आपको होना जरूरी है. लेकिन पाइथन में वहां पे कोडिंग है, तो आपको वहां पे दोनों चीजों की नॉलेज होना जरूरी है, स्टैटिस्टिक की भी और प्रोग्रामिंग की भी. इसलिए हमने पहले आप लोगों को पाइथन की प्रोग्रामिंग बताई. पाइथन में फर्स्ट मॉड्यूल में आपको पूरा ओवरऑल पाइथन बताया. ठीक है. और एसपीएसएस इंस्टॉल एनी वर्जन ऑफ विंडोज. ठीक है. So this is Python screen. I'm just going to close. ये मैंने कुछ आपको पीपीटी दूंगी ना, तो आप लोग पढ़ लेना इसमें. तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के है कुछ इसमें पॉइंट्स. और अब मैं आपको फाइल रीड कर, हमने जो फाइल बनाई है उसको मैं एसपीएसएस में रीड करूंगी. ठीक है. फाइल ओपन एंड डेटा के थ्रू. ठीक है. This is SPSS screen. Are you able to see the SPSS screen, everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh, there is only one student. 93 participants. See, electronic. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Electronic monitoring is also going on. Yes, ma'am. मैं आप लोग कोई भी मुझे ये नहीं बोल सकता कि मैं सामने आप लोगों को वो शीट ला कर दूंगी उस दिन की. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग इज ऑल्सो देयर. बी सीरियस. सो एवरीबडी, दिस इज द एसपीएसएस स्क्रीन. एंड इसमें दो है, एक डेटा व्यू है, एक वेरिएबल व्यू है. अगर आप डायरेक्ट कुछ बनाते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन द वेरिएबल हियर. लेकिन अभी मैं डायरेक्ट तो नहीं है, मैं इंपोर्ट कर रही हूँ फाइल एक्सेल की, वो खुद ब खुद यहाँ आएगी. यहाँ में थोड़े से चेंजेस करने हैं, वो मैं आपको बता दूंगी कैसे करने हैं. हाँ ठीक है. डेटा व्यू आ गया हमारा. तो फाइल एंड ओपन डेटा एंड अगर यहाँ से नहीं होगा तो मैं कॉपी पेस्ट मार्कर भी कर सकती हूँ. वेट करो, ये थोड़ा सा इट टेक अ टाइम. प्रोसेस हो रहा है. इट विल टेक अ लिटिल टाइम.
ये आ गया डेटा, ये स्क्रीन हो गया एंड आई विल गो फॉर माय डेस्कटॉप. डेस्कटॉप पे व्हाट वाज द फाइल में आई हैव टू सर्च द एक्सेल फाइल थी एक्सेल and my data set, and I will open ये क्या बोल रहा है रेंज, ये ठीक है. ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये पूरा रेंज में कुछ नहीं देंगे. रीड अ वेरिएबल नेम फ्रॉम द फर्स्ट रो ऑफ द डेटा. ओके ये देखो इंपोर्ट हो गई फाइल. दिख रही सबको? यस मैम. फाइल इंपोर्ट दिख रही? हाँ. यस मैम. अच्छा, अब ना ये इंपोर्ट हो गई है हमारे पास. अब मैंने इसीलिए आपको सबसे पहले डेटा टाइप पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया आपको? यस मैम. यस मैम. अच्छा, डेटा टाइप. स्टूडेंट कोड का कोई, देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ स्टूडेंट कोड. जेंडर किस तरह का है डेटा? What type of data type are data, मतलब मेजर ऑफ लेवल ऑफ डेटा में कौन सा है जेंडर? Which level is level of measurement in which category come under the gender? Gender is come? Nominal. Good. Group, age group? Scalar. Good. Education? Ordinal. Nominal. एजुकेशन बोलो, डरो मत, सही बोल रहे हो. नॉमिनल. ऑर्डर नहीं है उसमें. आप ऊपर लिखो, नीचे लिखो, कुछ भी लिखो, उसमें कोई ऑर्डर नहीं है. मैं 4 बच्चे खड़े हैं और मैं बोलूंगी व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, आप बोलेंगे पीजी, वो बोलेगा अंडर ग्रेजुएट, वो बोलेगा 12th. इसमें कोई ऑर्डर नहीं. हाँ, मैं जब उसको बोलूंगी you can arrange these 5 students as per their qualification, then it become an order, an ascending order. तो आप क्या करोगे? 10th, 11th, 12th, इस तरह से in this way you can arrange that. Then the student perception, which type of data is this? Ordinal. It is ordinal. It is ordinal नहीं, it is a ordinal scale. दिया ना हमने स्केल है ना, वो 5 to 1 का स्केल है वो. Yes ma'am. Yes. Yes, ma'am. And कंटिन्यू अटेंडिंग Also scalar. नॉमिनल है. ठीक है. हाँ, अब देखो, अगर हम जेंडर देखेंगे, जेंडर, एजुकेशन एंड कंटिन्यू अटेंडिंग, 3 types of data set, type of data is in our nominal data, and nominal data represent the क्वांटिटेटिव. जेंडर का एग्जांपल मैंने दिया ना, क्वांटिटेटिव. डेटा टाइप 2, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. एंड क्वांटिटेटिव में क्वांटिटी, क्वालिटेटिव डेटा. जेंडर मेल फीमेल. समझ रहे हो मेरी बात को? यस मैम. ठीक है. अब क्वालिटेटिव डेटा तो स्टैटिस्टिक्स लेता नहीं है. ठीक है. उसी तरह से हमने एजुकेशन ले लिया. ठीक है. स्केल तो लेता है, चलो स्केल, हम उसको स्केल डिफाइन कर देंगे. गुड, वेरी गुड का मतलब 5 है, एक्सीलेंट 4 है, 5 है. यस नो नॉमिनल है. यस और नो में आंसर है, मे बी है. अगेन जेंडर, एजुकेशन एंड कंटिन्यू अटेंडिंग, तो ये क्या है? दीज आर द नॉमिनल डेटा सेट एंड क्वालिटेटिव. तो अभी हमें क्या करना है? when we want these variables should be the part of our this analysis, we convert it into quantitative form. and convert कैसे होता है? हम इनको assign करेंगे कुछ values. क्या करेंगे? वैल्यू कोडिंग कर देंगे इसको, और कोडिंग के बेस पर हम उसको एनालिसिस करेंगे. किसके बेस पर? कोडिंग के बेस पर. मैंने अभी प्रोसीजर आपको समझाया कैसे प्राइमरी डेटा कलेक्ट होता है. फिर प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने में मैंने डाउनलोड की फाइल. देन व्हाट आई डिड, आई मेक सम डेटा में कोई चेंज नहीं किया, एक आधी मिसिंग था उसको लिख दिया. बाकी मैंने वेरिएबल को, उस डेटा सेट को
SPSS के अकॉर्डिंग बनाया। सेम केस इन फ्यूचर, अगर आप R सॉफ्टवेयर लेते हो, you have to make your data set before import in a R, before input in a Python into the according to the software, or according to the, अगर Excel था तो according to the Excel. So I am using the SPSS here, so I make this data set as per the SPSS. But still it is not ready for the analysis because there are some variables in my data set. Those are nominal data variable, and nominal always represent quality, and quality is not part of the analysis. So what I have to do, I have to code it. I have to convert this data into the numbers, numerical form में. Getting my point? समझ रहे हो? तो अभी भी मैं इसको एनालिसिस के लिए यूज नहीं कर रही हूँ. आई एम नॉट यूजिंग फॉर एनालिसिस. फर्स्ट ऑफ ऑल अब इधर मैं इसको एनालिसिस के लिए तैयार करूंगी. तो आई विल गो फॉर अ वेरिएबल, आई विल मेक सम चेंजेस हियर. ठीक है, अब देखो क्या है स्टूडेंट कोड. अब इसका ये वेरिएबल व्यू को समझने की कोशिश करो. अगर आप यूज करते हो तो ठीक है, नहीं यूज कर, शॉर्ट ये यूज बहुत सारे करते हैं. जो प्रोग्रामिंग है ना, कंप्यूटर साइंस के लोग वो इसको यूज नहीं करते. ठीक है, वो इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि उनको अच्छा लगता है कि प्रोग्रामिंग पाइथन करे, उनको अच्छा लगता है कि आर करे, उनको उस चीज की डिमांड है. इन विच दे लर्न बोथ द थिंग्स, दे लर्न कोडिंग, दे लर्न एनालिटिक्स. But those who are non-technical background student in my class here, यहाँ पे तो सब है, non-technical technical दोनों ही है. तो हम दोनों चीजें आप लोगों को समझा रहे हैं. टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ओपन सोर्स भी, स्टैंडर्ड भी, हर तरह का आपको एक्सपोजर दे रहे हैं. ठीक है, और जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, दे डोंट हैप्पी विथ कोडिंग ऑल दिस. MBA, BBA, BCA इस तरह के स्टूडेंट जो है, दे डोंट वांट गो फॉर अ कोडिंग. They use this type of software. So Python was helpful for technical people. This is helpful for non-technical. But take the exposure, knowledge लेना, कोई भी बैकग्राउंड, मैं दोनों हूँ. देखो मेरे को एज अ टीचर समझो, मेरे को टेक्निकल बैकग्राउंड भी है और नॉन टेक्निकल भी है. मतलब मैं पाइथन की प्रोग्रामिंग भी, आपको एक वीक में आपको पाइथन की प्रोग्रामिंग दिखाई और एक वीक में आपको दूसरे तरीके का स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर से एनालिसिस बता रही हूँ. गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह से ना अपने आप को वर्सेटाइल बनाओ. तो स्टूडेंट कोड, अब मैं थोड़ा सा इस वेरिएबल को समझने की कोशिश करूंगी. देखो स्टूडेंट कोड स्ट्रिंग ठीक है, एंड हमने उसको S1, S2, S3 दे दिया. विड्थ है, अगर आप ज्यादा बड़ी विड्थ देते हो तो वो मेमोरी ले लेता है. आप लेबल दे सकते हो. आप लेबल इसमें ये दे सकते हो कि आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो. ये है, जैसे यहाँ वेरिएबल नेम है, स्मॉल नेम है, आप इसको कैपिटल पूरा अच्छी तरह से लिख सकते हो. स्टूडेंट ID नंबर. इन दिस वे यू कैन राइट. वैल्यूज की कोई जरूरत नहीं, मिसिंग की कोई नहीं है. 4 कॉलम विड्थ ठीक है, लेफ्ट हैंड नॉमिनल डेटा है. ठीक है, अब जेंडर है. जेंडर को क्या बता रहा है ये? विच टाइप ऑफ डेटा बता रहा है? स्ट्रिंग कर दे. ये स्ट्रिंग आप कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हो. यू लर्न दिस कॉन्सेप्ट इन कहाँ पे? पाइथन में. स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग डेटा इज नॉट यूज फॉर एनालिसिस पर्पस. तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रिंग डेटा को आपको नंबर बनाना पड़ेगा, न्यूमेरिक बनाना पड़ेगा. तो आप क्या करोगे? आप इसको तो पहले ऐसे ही रखो, मैं यहाँ पहले आगे बनाती हूँ, या आप इसको यहाँ देखो करोगे. यहाँ पे वो बोलता है डेटा टाइप. Which data type? Yes, please don't make noise. न्यूमेरिक ले लिया मैंने. ठीक है, और जेंडर डेटा टाइप मैक्सिमम फीमेल 6. ठीक है, ये हमने इसको रख दिया, मैंने इसको न्यूमेरिक कर दिया और लेबल में लिख दिया जेंडर. जेंडर ही लिखो है, स्टूडेंट जेंडर, तो जेंडर ही कर दो उसको जेंडर. अब मैं यहाँ इसका वैल्यू चेंज करती हूँ. अब देखो समझने की कोशिश करो. मैं इसको कर रही हूँ 1 को मैंने पहला दिया मेल, MALE. ओहो, मेल. मैंने मेल को कोडिंग कर दी. मेल वाज जेंडर, मेल. अब जितने मेल है वो 1 हो गए, एड. एंड 2 को मैंने दे दी कोडिंग फीमेल, एंड एड. अब ये बन गया जेंडर, बन गया न्यूमेरिक. ठीक है,
और ये कॉलम विड्थ 9, ये ठीक है। अब इसमें कोई ऐसा ये नहीं है, नॉमिनल में रख लो, न्यूमेरिक डेटा टाइप, कोई इश्यू नहीं है इसका, ठीक है। अब एज ग्रुप हमने क्या दिया था, स्केल दिया था ना स्केल। Yes, ma'am. बाय डिफॉल्ट अब स्ट्रिंग ले रहा है, तो हम इसको कॉमन डेटा टाइप कस्टम स्ट्रिंग हो गया। हम इसको न्यूमेरिक करके स्केल ले लेंगे, इसको भी हम उस तरह से कर देते हैं। न्यूमेरिक स्केल था, उसको भी स्केल को हम डिफाइन कर देंगे, ठीक है। न्यूमेरिक 1, और ये है स्टूडेंट एज वेरिएबल क्या था, ये एज है। और यहाँ पे व्हाट वाज द स्केल, क्या स्केल ग्रुप था, 15 to 15 to 20 ग्रुपिंग है, ये स्केल वाला डेटा है। मैंने होल नंबर नहीं लिया, मैंने एज नहीं लिया। अगर आप एज लेते हो तो फिर आपको ज्योमेट्रिकल मीन वो आपका रेशो वाला आ जाता है, रेशो डेटा टाइप। जो स्केल है, मैंने ग्रुप डेटा लिया, मतलब 15 से 20 रेंज के लोग, ठीक है। अब मैं उसको एनालिसिस ऐसे करूंगी कि 15 से 20 के जो एज ग्रुप के स्टूडेंट है उनका क्या परसेप्शन है, ठीक है। तो 1 एंड ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे 1, और 2 ले लिया वैल्यू, देन आई ऐड 21 to 25 लिया ना, हाँ 25। ये मेरा बन गया स्केल। तो मैंने सारे डेटा टाइप को न्यूमेरिक किया, क्योंकि न्यूमेरिक ही एनालिसिस में है और वो बाय नेचर स्केल है जो हमने कलेक्शन किया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन स्ट्रिंग ले लिया, तो ये भी हमें अगर एनालिसिस में लेना है तो हम इसको न्यूमेरिक करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल डेटा विल कम फॉर एनालिसिस, ठीक है। आप कोई भी तरह का डेटा ले आओ, खाली हमें इसको खाली टूल के टाइम समझना है कि विच टूल वी शुड अप्लाई। तो यहाँ पे ये यहाँ अगर नहीं लेगा वो, इसको मैं स्केल कर देती हूँ। ये हमने स्केल पर लिया है तो उसको स्केल कर देंगे, और ये नॉमिनली रहेगा जेंडर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, हाँ जी। पहला वाला स्केल 1 एसएससी ये लिया है ना, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। 2 HSC हायर सेकेंडरी स्कूल, HSC 2। 3 UG, ठीक है। एंड सॉरी क्या गलत कर दिया मैंने, 2 पहले से, अब 3 लेना था। 3 UG एंड 4 PG, पोस्ट ग्रेजुएट। तो ये मैंने कर दिया। ये एजुकेशन नॉमिनल डेटा है तो इसको नॉमिनल पर ही रखा मैंने। परसेप्शन, ठीक है। परसेप्शन को नॉमिनल न्यूमेरिक लेकर स्केल चेंज कर दूंगी मैं। ये है एस मतलब स्टूडेंट्स परसेप्शन। आप इसको अच्छी तरह से आराम से लिख सकते हैं। इसमें 150 लेटर्स आ सकते हैं, 125 to 150 225 लेटर्स आ सकते हैं। STUDENTS स्टूडेंट्स परसेप्शन, PER परसेप्शन, स्टूडेंट्स परसेप्शन, PERCEPTI, ठीक है, परसेप्शन, ठीक है। अब परसेप्शन भी हमारा था स्केल में, ठीक है। हम हाईएस्ट टू लोवेस्ट देते हैं, जैसे हमने दिया था 5 देंगे, और 1 to ऐसे देते हैं तब भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन फिर 1 को पुअर देना है। तो हम हाई, जैसे मैंने क्वेश्चन में दिया था स्केल इज डिफाइन 5 to 1, तो उसी तरह से इन सेम मैनर वी कैन डिफाइन। 5 इज excellent, 4 is very good. ठीक है। एंड 3 is good. एंड देखो कितना मुझे बनाना पड़ रहा है डेटा को एनालिसिस के लिए। ये सारा काम होता है। ऑर्गेनाइजिंग डेटा इज रॉ, कुछ भी आ गया, फिर उसको सॉफ्टवेयर फॉर्म में बनाया, दैट इज अरेंजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फिर एनालाइजिंग। ऐसे ही उठकर एनालिसिस नहीं हो जाता है ना। 2 एवरेज। This slide, ma'am. Ma'am, can I ask you a question, ma'am? Yes, ask. Ma'am, how many measurements are there other than nominal and scalar? I
I told you three measurements are three: nominal, ordinal and scale. Okay. ठीक है, अब ये स्केल पे है तो हम इसको स्केल पे लेंगे। कभी कभी क्या हो जाता है कि कुछ हमारे डेटा की वजह से ना वो लेता नहीं है, तो हम अभी स्केल में दिखाते हैं। अगर कभी एरर आया तो देन वी कैन चेंज द स्केल, मेजरमेंट चेंज कर देंगे। लेवल ऑफ मेजरमेंट पढ़ाया ना मैंने आपको, नॉमिनल, ऑर्डिनल, स्केल। अच्छा, कंटिन्यू अटेंडेंट, तो ये भी आपको न्यूमेरिक करेंगे, इसको भी हम एनालिसिस का पार्ट बनाएंगे। जिस जिस वेरिएबल को आप एनालिसिस का पार्ट बनाना चाहते हैं उसको आप न्यूमेरिक कर कर उसका मेजरमेंट चेंज कर दो। कंटिन्यू अटेंडिंग, ठीक है। तो व्हाट वाज द आंसर? यस एंड नो। तो 1 को हम देंगे यस, 2 को देंगे हम नो। मैम वो भी था मे बी। अच्छा, थर्ड देंगे मे बी। मे बी, ठीक है, ऐड हो गया। और नॉमिनल डेटा, अब ये थोड़ा सा मेरा डेटा अब तो तैयार हो गया। गॉट इट? यस मैम। ये मेरा डेटा अब ये तैयार हो गया। अब देखो इसने क्या कर दिया, सारा जो है इसको हाइड कर दिया। इसमें मैं 1 मिनट व्यू डेटा कर देती हूँ। कहाँ पे? वैल्यू लेबल। वैल्यू लेबल क्या रीजन हो गया? 1 मिनट मुझे देखना पड़ेगा। 1 मिनट। वैल्यू लेबल, यहाँ पे है व्यू। ओके, एक बार स्केल को मैं देखती हूँ, जो स्केल मैंने चेंज किया है, नॉमिनल ऑर्डिनल करके देखती है। 1 मिनट। वैल्यू लेबल एक ग्रुप का 0 दिखा रहा है, एज ग्रुप, एजुकेशन, थोड़ा सा वेरिएबल का मैं एक बार वेरिएबल इसका ना स्केल को ठीक करती हूँ। मे बी स्केल की वजह से उसने किया। ऑर्डिनल एक सब नॉमिनल कर कर देख लेती हूँ। एक मिनट। यहाँ पे तो दिख रहा है, लेकिन ये तो डेटा यही आना चाहिए था ना, 1 to 1 2 होना चाहिए था। डेटा तो आपका ऐड है।
सिलेक्ट तो करना नहीं है हमें, बनाना तो नहीं है वेरिएबल्स, कुछ वेरिएबल पे मैंने गड़बड़ कर दिया। वैल्यू व्यू एक को पहले कर कर देखते हैं। जेंडर, जेंडर हो गया, ये कहाँ से वेरिएबल्स आ गए? मैम उनको स्ट्रिंग करके देखो, हाँ, स्ट्रिंग करके देखो न्यूमेरिक की जगह पे। स्ट्रिंग कर कर, हाँ स्ट्रिंग कर। एक मिनट रुक जाओ, मैं अपने तो मेरा दूसरा सेट देखूंगी डेटा सेट को। वो ये ना ऐसे यहाँ पे सारा व्यू हो जाता है 1 2 1 2, मतलब जो कोडिंग है ना, जो जेंडर मेल 1 2 मेल 1 2 1 2 ऐसा ना व्यू हो जाता है। वो कहीं क्या गड़बड़ कर दी है हमने, वो नहीं समझ आ रही मुझे। यहाँ पे कुछ वैल्यूज में मैंने दे दिया 1 मेल 2 फीमेल, चेंज। एक मिनट, आप इसको मिनिमाइज करती हूँ मैं, मिनिमाइज कर दिया और कैंसिल। ये एक मेरा डेटा सेट है ना, उसको ओपन करके देखती हूँ उसमें। ओके, न्यूमरिक सारा नॉमिनली लिया है इसमें सब डेटा सेट को। वैल्यू लेबल, कुछ तो गड़बड़ हो गई है। न्यूमरिक हो गया, एक मिनट में इसको वापस से स्ट्रिंग, एक मिनट में ना इसको फिर से एक्सपोर्ट करती हूँ फाइल को। ठीक है, एक मिनट, इसको फिर से, ये दिख रहा है स्क्रीन आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। एक उस फाइल को दोबारा से एक्सपोर्ट करती हूँ, नहीं तो ऐसा तो कभी नहीं होता है।
एक बार ये हो जाए ना फिर आप लोग फटाफट एनालिसिस बना पाओगे। ठीक है, एक मिनट मैं इसको करती हूँ, फाइल ओपन रीड डेस्कटॉप, एक्सेल फाइल। ये जैसे ये आ गया ना आपका, या जैसे डेटा आता है, ये इसकी जगह जो हमने कोडिंग की ना वो दिखती है 1 2 1 2। तो मैं अभी पहले एक को चेंज करती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है मेल और फीमेल में से। तो मैंने वेरिएबल ले लिया यहाँ पे, अगर इसको ये वैल्यू लेबल अभी नहीं दिखेगा। ठीक है, पहले मैं वेरिएबल लेती हूँ, जेंडर है, जेंडर को मैं मैं इसको न्यूमेरिक कर देती हूँ, ओके, और एक लेबल वैल्यू दे देती हूँ 1 इक्वल टू मेल इक्वल टू ओहो, क्या सॉन्ग चल रहा है? तो इसने क्या दिक्कत हो गई? क्या डेटा एंट्री में कुछ गलत है? व्यू अच्छा, एक मिनट जाते हैं, देखते हैं, एक बार ट्राई करती हूँ, नहीं तो फिर मैं मेरे डेटा सेट से दिखाती हूँ आप लोगों को। फिर मैं इसका कल क्या इशू था, टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो इसमें क्या इशू हुआ, क्यों नहीं दिख रहा है, वो मैं खुद पहले एक्सप्लोर कर लूंगी, फिर आज कि क्या इशू हो गया इसमें। इनपुट रोल क्या है इसमें? कुछ इनपुट रोल का कुछ रोल है क्या? इनपुट रोल तो कुछ नहीं है। इनपुट रोल स्केल हो गया, ये ऑर्डिनल में भी देखा मैंने, डेटा टाइप चेंज कर या फिर नॉमिनल ही रखा तो ये यहाँ पे ना आ जाता है 1 2 1 2, जैसे जो है वो कोडिंग आ जाती है। वेरिएबल व्यू न्यूमेरिक नो सॉन्ग। अमन, नो टॉक। चलो इसको मैं देखती हूँ क्यों नहीं वो एक्सपोर्ट हो रहा है, और मैं कल आपको ये बता दूंगी। ठीक है, इसको क्लोज करती हूँ मैं, और मैं मेरा डेटा सेट ओपन करती हूँ, उससे आपको एनालिसिस बताऊंगी। ठीक है, गॉट माय पॉइंट? यस ये मैम। कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कुछ गड़बड़ हो रहा है,
इश्यू क्या था वो मैं फाइंड आउट करूंगी कल, पक्का इस डेटा सेट का आपको बताऊंगी। बाकी का क्योंकि अगर मैं इस डेटा सेट पे लगी रही तो फिर दिक्कत ये हो जाएगी, कहीं यहाँ से तो नहीं लेना पड़ेगा न्यू डेटा सेट। चलो मैं बाद में इसको यहाँ से मैं अपना वो वाला डेटा सेट ओपन करती हूँ। ओपन डेटा, ये .csv यहाँ से लेना मुझे, कहाँ से, उसमें भी कुछ वेरिएबल्स है वो हम फाइंड आउट करेंगे। डेस्कटॉप से ये एक है क्रॉस कल्चर का है डेटा सेट, इसको मैं ओपन करती हूँ। मैं आपको इसका एनालिसिस बता दूँ, ठीक है। इसमें से कुछ वेरिएबल्स है, अगर आप देखेंगे एज है, जेंडर है, इसको हमने वैसे ही लिया था। देखो एज है ना, मैंने वैसे ही लिया था 1 to 20, 3 to ये, और ये इस तरह से ओके किया था, ठीक है। तो आई डोंट नो कि इसमें क्यों आपके इसमें वो क्यों नहीं ले रहा है, और नॉमिनली ले लिया हमने। डेटा टाइप ये डेटा है, ठीक है। अभी ये कोडिंग दिख रही है, अगर इसको कोडिंग हटाकर आपको वैल्यूज देखने हैं तो ये आपका हो गया वैल्यूज, दिख रहा है वैल्यूज। यस मैम। ये अभी हमने जो देखा था वो वैल्यूज थे, ऐसे है ना। तो लेकिन ये वैल्यूज है और कोडिंग देखनी है आपने, तो ये वैल्यू लेबल हटा दो, इसमें ये आपकी कोडिंग है। तो अभी हमारा सब जो डेटा है वो न्यूमेरिक फॉर्म में है। तो मैं कुछ चीजें आपको इसमें से दिखाऊंगी। तो एक है एज बताऊंगी, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन और कंट्री, कुछ एक दो लेंगे जिससे आपको वो एनालिसिस समझेगा कैसे। टोटल नंबर मेरे इसमें 30 रेस्पोंडेंट्स है, वो उसमें तो बहुत ज्यादा रेस्पोंडेंट थे, उसके ऊपर मैं देखूंगी क्या इश्यू हो गया। होना तो नहीं चाहिए, बहुत काम करती हूँ मैं एसपीएसएस में, तो क्या दिक्कत हो गया छोड़ो, ठीक है। थोड़ा इसको मैं मिनिमाइज करके आपको कुछ पीपीटी का कुछ पोर्शन बताती हूँ, फिर हम आगे जाएंगे। ये था ओपन फाइल डेटा, टेक्स्ट फाइल, एक्सेल फाइल, ये इंपोर्ट करने का तरीका था, तो इंपोर्ट तो हुआ लेकिन वो ये नहीं। ये कुछ एक्सरसाइज है, मैं आपको ले जा रही हूँ यहाँ पे। स्टैटिस्टिकल टूल, पहले हम समझेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। हाँ, तो आप लोग जनरली हमेशा सुनते हो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अभी जो मैंने यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये डेटा टाइप जिसमें एज है, एज को मैंने कोडिंग की है, तो एज ग्रुप जो है, अगर आप इसको ग्रुप को देखेंगे, डेटा व्यू करेंगे, एज वाला लेते हैं, तो इसमें जो ग्रुपिंग थी वो 41 से 50 थी, और ये 20 से शुरू है। एज ग्रुप मैंने 20 to 30, 31 to 40 एंड 41 to 50, और एक आधी शायद मैंने 50 एंड अबव भी लिया है, या 50 पर ही खत्म किया है, ठीक है। तो इस एज ग्रुप ये है, ठीक है। तो अब ये एज जो मैंने ग्रुपिंग में ली थी, ठीक है, तो अब आपको निकालना है इस एज के, ये 30 लोगों में से आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको, पहले हम फ्रीक्वेंसी का समझेंगे। A frequency is the number of times a data value occurs, ठीक है। आपको बताना है फ्रीक्वेंसी क्या होती है। A frequency is a number of time data value occurs. For example, if 10 students score 80 in statistics, the score of 80 has a frequency of 10. Frequency is often represent a letter F. F को हम दिखाते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और एक एग्जांपल मैंने और लिया है, फ्रीक्वेंसी इज एन ऑब्जर्वेशन टेल you the number of times the observation occur in the data. For example, the following list of the numbers, the frequency of the number n is 5. क्या मतलब है? ये एक डेटा है, ठीक है। इसमें से आपको इसको बतानी है फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि 9 की फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब ये 9 मीन्स ये 9 कितने बार रिपीट हुआ है। तो आपने देखा 9 5 बार रिपीट है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई 5, ठीक है। और अगर आपने मुझे आपको बताना है कि 6 कितने बार रिपीट है इसमें, तो 6 की फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी? 1 एंड 2 समझ रहे हो ना। 1 कितने बार रिपीट है? 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो इस तरह से ये हम
फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, मैनुअली भी निकालते हैं और सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं निकालना आपको सिखाऊंगी। जैसे मैं आपको एक चीज बताने वाली थी इसमें, वो हाँ ये टेली बार, ये फ्रीक्वेंसी निकाला है। 0 कितने बार ऑकर है, तो हम पहले पुराने टाइम में जब हम मैनुअली निकालते थे ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हम इसको ये निकालते थे, टैली निकालते थे। जितने बार है उतने 0, 1 2 3 4, 0 4 टाइम्स है तो 4, फिर 1 कितने टाइम है, 6 टाइम है, तो हमने 4 एक लाइन मारी, वो होगी 5 और एक उसको 6 कर दिया, वो 6, इसको बोलते हैं टैली, टैली करते थे। इस तरह से मैनुअली फ्रीक्वेंसी निकाली जाती थी। लेकिन अब वो सिस्टम तो खत्म हो गया। ठीक है, आप लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो ना, तब ये करते हो ये प्रोसेस, तो आपको ऐसा रॉ डेटा दिया जाता है एंड यू विल कलेक्ट द फ्रीक्वेंसी। तो अभी हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को सॉफ्टवेयर के थ्रू निकालेंगे, एसपीएसएस के थ्रू कैसे निकालेंगे, जैसे कि ये हमारा एज वाला निकालेंगे हम, ठीक है। तो मैं इसको लेबल, जो हमने लेबल की, आपको इसमें बताना है 3 कितने बार है, जो कोडिंग हमने 3 की है वो कितने बार है, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, 2 की कितनी फ्रीक्वेंसी है, 1 की कितनी फ्रीक्वेंसी। 3 रिप्रेजेंट विच एज ग्रुप, द 3 रिप्रेजेंट एज ग्रुप 40 to 50, ठीक है, नोट कर भी सकते हैं आप एक पेज में आपको समझने के लिए। 2 represent age group 31 to 40 and 1 represent the age group 20 to 30. So you have to find out the frequency of age. Similarly, you can find out the frequency of others also. पहले मैं आपको age का समझाती हूँ, ठीक है। So आपका वैल्यू है, तो हम यहाँ जाएंगे, देखो ये सारा बहुत सारे यूटिलिटीज है इसमें, किसमें, एसपीएसएस में, और मैं यही फ्रीक्वेंसी निकालना आपको एक्सेल में बताऊंगी, ठीक है। तो ये एनालिसिस है, एनालिसिस में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, और यहाँ क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब आपको जिसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए आप यहाँ वेरिएबल को वो पास कर सकते हैं। तो मैं पहले फॉर एग्जांपल मैंने एज का कर रही हूँ, तो मैं एज का ही देखूंगी पहले आपको समझने के लिए। एज है, और यहाँ क्या क्या है, स्टैटिस्ट में और कुछ और स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएशन निकाला, ये अभी मुझे नहीं करना है, मेरे को अभी सिंपल फ्रीक्वेंसी चाहिए। मैंने सॉफ्टवेयर को बोला एज की फ्रीक्वेंसी निकालो और ओके किया, तो यू विल गेट द आउटपुट। ये देखो कैसा आउटपुट आपको मिलकर आया, आपको परसेंटेज में निकल आया, ये दिख रहा है आप लोगों को सबको? यस मैम। थोड़ा सा एसपीएसएस ना कुछ ज्यादा कुछ निकाल कर देता है, ठीक है। उसने पहले स्टैटिस्टिक्स चेक किया, वेरिएबल एज है, हाउ मेनी नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट्स आर 30, देयर इज नो मिसिंग डेटा इन द एज पैरामीटर्स, कोई भी मिसिंग नहीं है, वो 0 है। अब वो यहाँ पे आप देखो क्या है, एज ग्रुप हमने ये ऐसे निकालते थे, वो पता नहीं कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते टाइम गलती हो गई है क्या, लेकिन मैं कल आपको उसको कर कर दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैं उसके ऊपर अभी एक्सपेरिमेंट करने लग जाऊंगी ना तो हमारा टाइम जाएगा, ठीक है। हम कल कोरिलेशन उसी पर निकालेंगे, या मैं कुछ थोड़े से स्टैटिस्टिकल शुरू उसी डेटा सेट पे करूंगी, ठीक है। तो ये 20 to 30, 31 to 40 and 40, तो क्या निकाली फ्रीक्वेंसी, 20 to 30 जो एज ग्रुप है वो 13 रेस्पोंडेंट है। ये इस तरह से सॉफ्टवेयर निकाल कर देता है। अब आपको इसको एनालिसिस करना है, दैट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। एनालिसिस करते टाइम क्या बोलते हैं आप, 20 देयर आर, कैसे लिखते, कैसे इसको कैसे एनालिसिस करते हैं, देयर आर 13 पीपल या 13 स्टूडेंट या रेस्पोंडेंट ऑफ 20 to 30। ये तो सब लोगों का था, बड़े बड़े एज लोगों का सर्वे था, आपका होता तो आप लोगों का भी ऐसे ही निकल कर देता, 20 to 30 और 31 to 40 एंड 41 to 50। तो कैसे एनालिसिस, टोटल नंबर आउट ऑफ टोटल 30 रेस्पोंडेंट, देयर आर 13 पीपल ऑफ एज ग्रुप 20 to 30, there are 6 people from 31 to 40, there are 11 people 41 to 50, और साथ में उसने परसेंटेज भी निकाल दिया। अगर आप परसेंटेज एनालिसिस करना चाहते हो कि कितने परसेंट है, तो आप बोलेंगे 43% है 20 to 30 एज ग्रुप का, 20% है 31 to 40 ग्रुप का, एंड 36 to 7 है 41 to 50 एज ग्रुप का। समझ आया फ्रीक्वेंसी? यस मैम। और ऐसे ही सॉफ्टवेयर, अगर यही डेटा सेट मैं पाइथन में लेकर करती या आर में करती, तो मुझे तरीका थोड़ा, ये फॉर्मेट डिफरेंट होता, रिजल्ट यही निकलता इस डेटा सेट में कि फ्रीक्वेंसी एज का कितना है। गॉट माय पॉइंट?
Yes, ma'am. उसी तरह से एक और दिखाती हूँ के लिए जेंडर का निकाल लेते हैं। जेंडर तो दो ही है, मेल एंड फीमेल है, तो आपको इसमें बताना 30 में से कितने मेल है कितने फीमेल है। एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसी, ये एज करोगे तो दोबारा से वो दिखा देगा, ऑलरेडी बनाया तो मैं जेंडर ले लेती हूँ। इस तरह से हम 4-5 वेरिएबल का सबका एक साथ निकालते हैं। एनालिटिक्स यही करते हैं क्योंकि अभी हमें एनालिसिस करना पड़ता है, तो ये जेंडर का निकाल लिया, तो हमने ओके कर दिया। अब देखो जेंडर का एनालिसिस क्या बता रहा है वो फ्रीक्वेंसी, आपको टोटल 30 है स्टार्ट फ्रीक्वेंसी, मेल 18 है इसमें और फीमेल 12 है, मतलब 60% ऑफ द रेस्पोंडेंट्स आर मेल एंड 40% आर फीमेल। ठीक है, सो इन दिस वे पहला हमने सॉफ्टवेयर के थ्रू फ्रीक्वेंसी, तो आपको फ्रीक्वेंसी समझना है कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट है कि एक डेटा सेट में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, हमने जो 1 2 1 2 1 2 1 कितने बार रिपीट हो रहा है, 1 रिप्रेजेंट मेल, सो मेल कितने हैं एंड फीमेल कितने, ये फ्रीक्वेंसी भी निकल गई और परसेंटेज भी निकल गया। ठीक है, एंड आई देन अगेन नेक्स्ट स्टैटिस्टिकल टूल मैं आपको बताती हूँ। फ्रीक्वेंसी समझ आया आप लोगों को? यस मैम। हाँ, ये थोड़ा सा नहीं मैंने साथ में परसेंटेज भी साथ में उसने निकाल दिया। व्हाट इज अ परसेंटेज? परसेंटेज को हम क्या करते हैं, एक परसेंटेज को हम एक क्वांटिफाई करते हैं, और उसको क्वांटिफाई हम करते हैं, उसको क्वांटिफाई हम 100 के इक्विवेलेंट करते हैं। ठीक है, 1% किस 1% इज इक्वल टू 100 नंबर है ना, तो जनरली परसेंटेज इज यूज, हम बोलते हैं कि परसेंटेज निकालो। वन ऑफ द frequently way of presenting a statistic is percentage. Percent simply means per 100 and a symbol used to express, and percent sign जो है ना उसको यूज करते हैं परसेंटेज के लिए। The percentage or 1% is 100 of the total or whole and is therefore calculated by dividing the total and whole numbers. ठीक है, परसेंटेज तो दिखाना नहीं है, उसी के साथ निकल गया था आपको, है ना? Isn't it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा दूंगी। अभी अब 2 बजे तक क्लास है, 2 बजे के बाद जितना समझता आज होता है उतना, नहीं तो फिर मैं कल और कंटिन्यू करूंगी आपको इसको। ठीक है, क्योंकि मेरा ऐसा है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाए तो फिर हम थोड़ा तेजी से भागेंगे, चलाएंगे। नाउ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, पहले हम समझेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। व्हाट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? ठीक है, अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ समरी स्टैटिक दैट रिप्रेजेंट द सेंटर पॉइंट ऑफ और टिपिकल वैल्यू ऑफ डेटा सेट। देखो मैं एक चीज बताती हूँ, मैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। एक क्लास में जनरली कितने बच्चे होते हैं? 60 होते हैं। Yes, ma'am. हाँ जी, बच्चे सो गए क्या सब, एवरीबडी? नहीं मैम। अरे नहीं मैम। मींस नो। हाँ, तो एक क्लास में जनरली कितने स्टूडेंट्स होते हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास? देयर आर 60 स्टूडेंट्स। ठीक है, I daily go to class. जब मैं frequently I take the class, when I take complete semester, then I can remember the names of the few students, most of the students, है ना? जो और ज्यादातर उन बच्चों का नाम याद हो जाता है, या तो वो बहुत शरारती है या जो बच्चे वो स्टूडियस है, और कुछ क्वाइट बच्चे रहते हैं वो थोड़ा सा लेट ही नाम याद होता है। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? यस। ठीक है, लेकिन अगर मुझे बताना है कि इन सब बच्चे 60 बच्चे समझो बीटेक सेकंड ईयर के हैं और ऑलमोस्ट ये एज ग्रुप होगी इनकी 20 साल। ठीक है, 20 इयर्स की होगी ये एज ग्रुप, या 19 to 20 इयर्स होगी। मैं 20 इयर्स की लेकर चला, अगर इनका 11 12 16 17 18 19 साल के होंगे, 19 से 20 साल के होंगे, ऑलमोस्ट इस रेंज के होंगे। अब मुझे याद रखनी है मुझे एज, तो क्या इज इट पॉसिबल फॉर मी एंड यू शुड रिमेम्बर एवरीबॉडीज एज? नो। No, ma'am. कितने ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। 60 बच्चों की में से हर आसिफ की एज क्या है, मुस्कान की एज क्या है, इसकी अमन की एज क्या है, और
कौन है वो, क्या नाम है उसका, राज, क्या नाम है उसका, उत्कर्ष की एज क्या है, ठीक है। वो एक लड़की सेक्शन बी की लड़की जो ये है हमेशा अटेंटिव रहती है, क्या नाम है उसका, संजना, संजना की एज क्या है। ऐसे सब बच्चों की मैं एज याद रखूंगी? नहीं नहीं मैम। नहीं। और ये तो एज का एग्जाम्पल, ऐसे कई कई चीज का एग्जाम्पल है मेरे यहाँ। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट, देयर आर 100 एम्प्लॉइज, ठीक है। तो उनकी सैलरी क्या है या उनका क्वालिफिकेशन क्या है, तो हर एक का ये ग्रेजुएट है, वो ग्रेजुएट है, इस तरह से नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, हम ऑन एन एवरेज करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक सेंट्रल पॉइंट याद रखते हैं कि अगर मेरा एज, फॉर एग्जांपल आई वांट टू, व्हाट इज द एज ऑफ दिस क्लास, तो सो वी पिक अ वन फिगर, एक वन सेंट्रल पॉइंट, ठीक है। वो सेंट्रल, कुछ बच्चे उस सेंट्रल पॉइंट के लेफ्ट साइड होंगे, कुछ बच्चे उस सेंट्रल राइट साइड होंगे, लेकिन होंगे उस सेंट्रल के इर्द गिर्द ही, आजू बाजू में। तो दैट सेंट्रल, मैं क्या करती हूँ, सेंट्रल पॉइंट याद रखती हूँ। तो दैट सेंट्रल पॉइंट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल टेंडेंसी। आई वॉन्ट टू, व्हाट इज द एज ऑफ माई क्लास, तो मैं एक एवरेज एज पकड़ूंगी। द एवरेज एज ऑफ दिस क्लास इज 20 years या 19.5, तो 19.5 बोले तो 20 years। तो एवरेज स्टूडेंट इन दिस क्लास ऑफ आर 20 एज ग्रुप। तो मैं क्या करती हूँ, एक सेंट्रल पॉइंट ऑफ पॉइंट्स के बेस पर आई एनालाइज द एज ऑफ द स्टूडेंट। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everybody? Yes, So that is called as a central tendency, measure of central tendency. A measure of central tendency is a summary statistics that represent the central point or typical value of data set. These measures indicate where in a distribution fall and are also referred as the central location of the distribution. मतलब क्या होगा, सेंट्रल पॉइंट वो तभी बनता है कि मोस्ट ऑफ द वैल्यूज, मैक्सिमम वैल्यू उसी सेंट्रल पॉइंट के अंदर होंगे, तभी वो सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब अगर 60 की क्लास है और मुझे सेंट्रल पॉइंट 20 है, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट आर 20 एज ग्रुप इन द क्लास। गेटिंग माई पॉइंट? Yeah, got it. Manish, these measures indicate where most value in the distribution fall and also referred to as the central location of the distribution. ठीक है? In statistics, the three most common measures of central tendency are, that is mean, median, and mode. ठीक है? Got it? Understood this point? ठीक है? अब मैं थोड़ा सा आपको हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में ले जाऊंगी, ठीक है। क्योंकि हम खाली स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम स्टैटिक्स के साथ एनालिटिक्स भी पढ़ रहे हैं कि उसका एनालिसिस करना है। तो मैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगी। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, हमने दो तरह के स्टैटिस्टिक्स पढ़े थे, एक पढ़ा था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एक पढ़ा था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, दूसरा पढ़ा था इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और इन्फ्रेंशियल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बोले तो खाली डिस्क्रिप्शन फॉर्म में है, इंफॉर्मेशन फॉर्म में है, और इसको अगर हमको एनालिसिस करना है देन वी हैव टू मेक दिस इन अ एनालिटिकल फॉर्म। वी मेक अ टेबल, ऑल दीज बनाकर उसको फिर देन वी गो फॉर फ्रीक्वेंसी, charts, means, and percentage. Second type is inferential statistics. Or inferential statistics, there are two parameters. One is a population and another is sample. ठीक है? तो जब भी हमको मीन लिखाना है, अब मैं inferential statistics percentage over मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो मैं दो तरीके बताऊंगी मीन निकालने के। अगर आप पॉपुलेशन लेकर कर रहे हो तो देन यू हैव टू गो फॉर ए पॉपुलेशन मीन, और अगर आप सैंपल लेकर कर रहे हो देन यू गो फॉर ए सैंपल मीन। ठीक है? जनरली क्या होता है, लोग जो भी करते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, दे गो फॉर अ सैंपल मीन, और जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में जो मीन निकालते हो ना, एवरेज निकालते हो, वो एक्स बार इज समेशन ऑफ एक्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर सिंगल सीरीज में है।
ठीक है। ग्रुप सीरीज में है तो थोड़ा सा फॉर्मूला दूसरा हो जाता है, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे फॉर्मूला के बेस पर तो नहीं समझना है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है और उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद सॉफ्टवेयर में अप्लाई करना है, ठीक है। अब मैं आपको पहले पॉपुलेशन मीन मतलब टू कैलकुलेट द मीन थ्रू एंटायर पॉपुलेशन, but it is very generally population is every time unknown. और फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बताने हैं कि हाउ मेनी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर इन यूपी, क्या बता सकोगे? हाउ मेनी बीटेक स्टूडेंट्स आर इन यूपी सेकेंड ईयर? डिफिकल्ट पॉपुलेशन फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि यूपी में बहुत सारे AKTU के कॉलेजेस हैं, और अब हम क्या करेंगे, जो मेरे नियरेस्ट है, मेरे नियरेस्ट ग्रेटर नोएडा है, द नियरेस्ट एरिया विच इज कन्वीनियंट फॉर मी टू कलेक्ट द सैंपल ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, सो आई विल पिक द ग्रेटर नोएडा एरिया एंड आई विल पिक ओनली दोज कॉलेजेस विच इज अंडर द AKTU, ठीक है। सो व्हाट आई कैन पिक द कॉलेजेस। अब मैंने क्या किया, अब मैंने कॉलेजेस को सैंपल बनाया, मैंने अपना पॉपुलेशन नोएडा ग्रेटर नोएडा रखा और सैंपल ले लिया कॉलेज, और कॉलेज में ले लिया मतलब इफ देयर आर 50 colleges greater Noida AKTU affiliated, so I will go, if it is possible for me 50, otherwise I will go 30% of 50 पॉपुलेशन जो भी निकलता है, फॉर एग्जांपल 20 कॉलेजेस, और 20 कॉलेजेस में मैंने रैंडमली, वो मुझे नहीं, आई एम नॉट बॉदर कि कितना सैंपल साइज है, आई अप्रोच टू इंजीनियरिंग बीटेक स्टूडेंट्स and then that is a sample, college is now my sample, and sample 20 ले लिया और फिर उसके अंदर 20 सैंपल को सिलेक्ट किया। फिर फर्दर अगर सैंपल कर रहे हो कि आप बीटेक टोटल आपने 100 लोगों को ले लिया, तो ये 100 बोले तो 100 आपकी बीटेक स्टूडेंट है, दिस इज अ सैंपल, दिस इज नॉट अ एंटायर पॉपुलेशन। So on the basis of sample you can find out the mean. So what is the use of mean? What is the mean? Mean means general language में we can say mean is the average. क्या है? Average. So and through mean we get a one value which will be define any entire sample, or which will be define entire characteristics of the population. Getting my point? So mean is the average value. So similarly, I will take the case of age. So there are different age group people. Second year 19, 20, some is 18 also. So to remember every student's age is impossible for me. So what I can do, I can calculate the mean value. I can calculate the average. Getting my point? And on the basis of, I will say the average age of this class is this. ठीक है? And what is this average? This is a central tendency. अब क्या होगा इस average? ये इसका मतलब क्या है कि आपका जितना भी है, आपने समझो 100 का सैंपल है, या मैं अभी जो मेरा डेटा सेट बोल रही हूँ उसमें 30 का सैंपल है, उसमें मैंने एज लिया है, उसमें मैंने ग्रुप में एज लिया है, ग्रुपिंग कर लिया। अब मुझे देखना है कि उस ग्रुप में एज, उसका अगर मैं मीन निकालती हूँ, व्हाट इज एवरेज एज, तो मैं एक चीज ध्यान रखो, वो जो मैंने डेटा जैसे ग्रुप में लिया स्केल पे, उस स्केल पे मैं मीन वैल्यू नहीं निकाल सकती हूँ, ठीक है, या मैं निकाल लेती हूँ, उसमें देखते हैं, हाँ निकल जाएगा उसमें, ग्रुपिंग पे तो निकाल सकते स्केल पर, ठीक है। तो मेरे को ये एज है, तो मुझे बताना है व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ दिस पॉपुलेशन 30 पीपल, ठीक है, क्या एवरेज एज है। तो मैं एनालिसिस में जाऊंगी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में डिस्क्रिप्टिव में जाऊंगी, ठीक है, और यहां से मैं एज ले लेती हूँ, एज भी ले लेती हूँ, जेंडर भी, एक दो चीजों का निकालती हूँ, ऑप्शन में जाती हूँ, और ऑप्शन में देखो यहाँ पे बहुत कुछ निकल आएगा मेरे को, मिनिमम रेंज भी निकल आएगी, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू भी निकल आएगा, या मिनिमम एज क्या है, रेंज तो यहाँ होगी, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू भी निकल आएगा, मीन एवरेज भी निकल आएगा, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकल आएगा। तो मैं थोड़ा आपको ज्यादा कंफ्यूज ना करूं, मैं पहले ये इनको हटा ही देती हूँ, खाली मैं मीन वैल्यू निकालूंगी, ठीक है। अगर आपको सम चाहिए, क्योंकि सम मीन मीन्स समेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही करते हो ना आप मीन निकालते टाइम,
समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कंटिन्यू कर रही हूं मैं और ओके कर रही हूं। नाउ सी, okay, what is a now see, this I have received the डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। मैंने किसका किसका निकाला था उसको, जेंडर और एज का। ठीक है, देखो इसने क्या मुझे एनालिसिस कर दिया। ठीक है, इसने बताया, अब इसको इंटरप्रेट करना है। अब देखो इसने क्या निकाल कर दिया मुझे। इसने मुझे बोला देयर आर 30 रेस्पोंडेंट्स। ठीक है, एंड द एवरेज एज इज 1.92। इसको हम क्या करेंगे, 1.92 को, हाँ 1.92, ठीक है, 1.92 को हम इसको ओके चलो ठीक है, इसलिए 1.9, द एवरेज एज ऑफ दिस रेस्पोंडेंट इज 1.92। 1.92 मीन्स, बोलो आप लोग समझने की। 1.92 बोले तो अब क्या, मुझे क्या एज मिल रही है इसमें, विच ग्रुप? 1.93 है। 1.93, ठीक है, 1.9 समझो, 3 हटा दो। 1.9 को अगर हम राउंड फिगर करेंगे तो क्या होगी एवरेज एज? 22, 23 मे बी। हाँ एग्जैक्टली, गुड, 31 से 40। हाँ, तो इसमें जो ज्यादा नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट है, जो एवरेज एज जो है इसमें जो ग्रुप है, एवरेज ग्रुप, मैं नहीं बोलूंगी नंबर ऑफ, एवरेज ग्रुप क्या है इसमें, ये मेरा पुराना वाला डेटा, कौन सा डेटा सेट है, यही तो डेटा सेट है। हाँ, तो इसको अगर मैं डेटा व्यू करती हूं तो एवरेज एज जो 2 है, 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 वैल्यू, ये 2 वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 20, 31 to 40. So what is the interpretation here? In this data set, in my respondent, the average age group people lies in 31 to 40. समझ रहे हो मेरी बात को? गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। yes ma'am, सो ये हमने मीन निकाला। इसका एक और कहाँ गया आउटपुट स्क्रीन। एंड जेंडर क्या है, 1.4। तो 1.4 मीन्स मेल ज्यादा होंगे। द एवरेज जनरली जेंडर के साथ हम मीन नहीं निकालते हैं, लेकिन फिर भी एज के साथ तो हम निकालते हैं, वो भी एज में होल नंबर के साथ निकालते हैं। लेकिन मैंने खाली आपको मीन निकालना यहाँ दिखाया, या मीन होल नंबर, अगर समझो आपने एज ऐसे एज डाल दी, ठीक है, एज आपने ऐसे एज डाल दी और फिर आप एवरेज एज निकालते हैं, तो यहाँ पे खाली एवरेज आपको एज निकालना, इसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा ये हो जाएगा। तो ठीक है, जो हमारे पास जो ज्यादा है वो मेल ग्रुप है, ठीक है। 1.2 मतलब 1.4 मतलब मेल ग्रुप ज्यादा है, और ये आपको यहाँ फ्रीक्वेंसी से भी आप पता कर सकते हो कि मेल 18 है और फीमेल 12 है, ठीक है। मैं आपको एक चीज एक चीज समझाना चाहती हूँ, जो थोड़ा सा ये इसको मैं क्लोज एक चीज आपको खाली एक आप लोग और रुक जाओ, जिससे आपको और थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी। ये मैंने ले लिया नया डेटा सेट और मैं यहाँ वेरिएबल डिफाइन कर रही हूँ एज, ठीक है, और ये ले रही हूँ न्यूमरिक, और ये हो गई एज, और ये मैं अब इसको होल नंबर डालने की कोशिश कर रही हूँ, आपको दिखाना चाहती हूँ होल नंबर से, वो स्केल पे था ना डेटा कलेक्ट कर। अब ये मेरी एज है, ठीक है, मैंने यहाँ पे अब इनपुट कर दिया, मैंने कर दिया, आप लोगों का है समझो, फॉर एग्जांपल ये है, तो मैंने यहाँ डाल दिया 18, बहुत मतलब बहुत डिफरेंट फिगर्स डाल रही हूँ मैं, जिससे किसी को पता ही नहीं चले कि क्या है। 21, 23, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 26, 25 ले लेते, 25,
22, 20, 22, 21, 19, 18, 16 एंड 17. ठीक है, अब ये मेरी होल नंबर, अब ये स्केल में नहीं है. अब मैं इसको आराम से मैं और एक दो एड ऑन कर लेती हूँ. ठीक है, क्योंकि हमारे को ना एनालिसिस का कुछ एक पर्पस होता है. वो वाले डेटा में हम फ्रीक्वेंसी अच्छी तरह से बता सकते हैं कि इतने मेल है इतने फीमेल है या इतने परसेंट इतने, लेकिन उस वाले डेटा में मीन नहीं बता सकते कि उसके मीन एवरेज क्या बताएंगे, मीन कैसे एनालिसिस करेंगे उसको. समझ रहे हो मेरी बात को, मैंने क्यों ये चेंज किया? समझ रहे हो बच्चों? यस मैम. हाँ, उसमें जब हम एनालिसिस कर रहे हैं मीन, तो वो मीन सही से एनालिसिस नहीं हो पा रहा है. ठीक है, उसमें क्योंकि वो स्केल पर है और उसमें वो स्केल पर परसेंटेज आप सही बता सकते हो कि 20% इस एज ग्रुप के. बोलने में भी समझो ना, आसिफ अपना वीडियो बंद करो. ठीक है, तो बोलने में भी हमें ये दिस मच एज ग्रुप स्टूडेंट्स आर देयर. उसके बाद आप 23, 24. ठीक है, अब ये मैंने होल डाल दिया. ये एक क्लास की एज है, आप लोगों की समझो. ये मैंने 24 स्टूडेंट्स लिए, 25 स्टूडेंट्स लिए. ठीक है, इसकी ये मैंने एज डाल दी. ठीक है, और एज डालने के बाद, ठीक है, एज डालने के बाद अब मैं चाहती हूं कि इज इट पॉसिबल फॉर मी टू रिमेम्बर द एज ऑफ 25 स्टूडेंट? No, ma'am. Huh? Sleeping everybody. How many students are present now? No. नो मैम. 1-2 बजे तक तुम लोगों को भूख लगने लग जाती है और मुझे मजा आता है पढ़ाने में. मेरे को कितने बजे भी शाम तक भी बोलोगे ना, मैं पढ़ाऊंगी. ठीक है, ये पूरा आपको एज आ गया. ठीक है, तो अब इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिमेम्बर. इफ समबडी आस्क, कोई भी नहीं मेरे को पूछेगा हाउ मेनी स्टूडेंट, ये पूछेगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन योर क्लास, मैं बोलूंगी 25. Nobody will care कि tell me each student's age. Question क्या होगा? What is the average age of the students in your class? What is the mean value of the on an average? क्या एज ग्रुप के बच्चे हैं आपकी क्लास में, ये पूछा जाएगा. तो मैं उस टाइम इस केस में जब मैं होल नंबर ले रही हूँ एज का, नाउ द मीन फाइंड आउट इज गुड. स्केल में उस टाइम की स्केल में कि वो थोड़ा सा वो स्केल के लिए परसेंटेज ठीक है, इतने परसेंट के लोग इतने स्केल ग्रुप के हैं, इतने एज ग्रुप के हैं, इतने ग्रुप है, या फ्रीक्वेंसी के लिए ठीक है, इतने एज ग्रुप के इतने, लेकिन मीन के लिए वो डेटा सेट सही नहीं है, इसलिए मैंने इसको होल नंबर लिया. तो मैं यहाँ एनालिसिस कर रही हूँ, एनालिसिस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड डिस्क्रिप्टिव. ठीक है, अब मैंने इसको एज को यहाँ ये कर दिया और ऑप्शन में यहाँ बहुत कुछ है, मैं ये बाद में करूंगी. सम का भी जरूरत नहीं है, सम चाहिए तो सम ले लो, ये मिनिमम मैक्सिमम हम बाद में देखेंगे क्योंकि आप कंफ्यूज ना. मैं खाली मीन चाहिए. Okay, ma'am. एंड ओ ये निकला. So what is average age? I will tell the average age is 19. 19. Approx 20. No. नो, अगर ये थोड़ा सा 50 रहता ना, 5.50 50, आप बोल सकते हैं कि एवरेज एज इज अप्रोक्सीमेटली 20. But it's not. But it is not. You say the average. What if somebody asks me what is the average age of your class? I will say 19, approximately 19. या अगर ये पॉइंट में गया तो मैं 19 to 20. इसका मतलब क्या है कि जो मेजॉरिटी ऑफ एज है इसी के आजू बाजू घूमेगा. ये 19 मिड है, इसके यहाँ 90 लेफ्ट साइड में कम होंगे, राइट साइड में उससे आगे होंगे, उसके बीच के जाएंगे. जो हमारा एंड पॉइंट 25 था और बिगनिंग पॉइंट 15 था. ठीक है, मिनिमम एज 15, मैक्सिमम एज 25, तो मिड पॉइंट हो गया 19. ठीक है, तो लेकिन ये 19 जैसे निकाला, इसका मतलब है ऑलमोस्ट ज्यादातर जो एज होंगी वो 19 ही होगी डेटा सेट. Yes, ma'am. ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. ठीक है, ये हो गया आपका मीन, सेंट्रल टेंडेंसी. ठीक है, एंड देन वी गो फॉर ए मीडियन.
Median is also one of the this word we can say median ये है part of central tendency है ना. और मीडियन क्या देता है? मीडियन मैंने यहाँ पे आपको दोनों ही सीरीज में दी है. जब आपके पास ऑड नंबर है तो यू विल गेट हाफ आप लोअर कर लो साइड कर लो और हाफ आप अपर साइड कर लो. ठीक है, यहाँ इसमें मैंने ऊपर अपर साइड कर लिया है, लोअर साइड कर लिया है. इसको जब भी मीडियन निकालते हो यू हैव टू अरेंज द डेटा सेट इन सम ऑर्डर. गेटिंग माय पॉइंट? आपको किसी ऑर्डर में डेटा करना है और जब इवन है तो आपको दो वैल्यू का मीडियन निकालना है. समेशन ऑफ दिस डिवाइडेड बाय 2 तो आपको मिल जाएगा 28 इसका मीडियन है. तो मीडियन निकालने, मीडियन क्या रिप्रेजेंट करता है? मीडियन रिप्रेजेंट द मिड वैल्यू. क्या रिप्रेजेंट करता है? मिड वैल्यू ऑफ द सीरीज. ठीक है, मिड वैल्यू वो एग्जैक्ट आपको मिड देता है कि दिस इज द मिड वैल्यू ऑफ द सीरीज. ठीक है, तो आप अगर आपके पास कोई सीरीज है तो फॉर एग्जांपल ये सीरीज है तो आप इसका मिड बोलेंगे तो आप बोलेंगे द मिड वैल्यू मीडियन इज 12. ठीक है, एंड मीडियन इज 22. द मिड वैल्यू इज 22. अब मैं इसको ये हमारे एज ग्रुप वाला इसको करते हैं. ये जो अनटाइटल है इसका मीडियन निकालते हैं, इसका मिड वैल्यू निकालते हैं और हमें इसको सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर खुद ही सॉर्ट कर देता है. अब मुझे इसमें देखना है मीडियन कहाँ है. डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंपैरेटिव मीन में है क्या? इसमें मीडियन देखते हैं. नहीं, यहाँ पे मीडियन होगा. एंड आई हैव टू फाइंड आउट द मीन एनालिसिस. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में है क्या? स्टैटिस्टिक्स. हाँ, यहाँ आपको सब मिल जाएगा. ठीक है, फ्रीक्वेंसी, मीन, मीडियन, मोड, एक ही साथ बता दूंगी, फिर मोड का कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगी. कल मैं सबको स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन और कोरिलेशन और रिग्रेशन बताऊंगी. कल थ्योरी नहीं पढ़ाना है ना, आज तो थ्योरी बहुत ज्यादा था ना. कल 2 घंटे में बहुत कुछ हो जाएगा. फिर वो आपके गेस्ट है, उन्होंने आपको कहा है ओपन सीवी पाइथन डाउनलोड करने के लिए. ठीक है, डाउनलोड हो रही है, नहीं हो रही है, जिसका हो रही है नहीं तो उनका डेमोन्स्ट्रेशन देखो कैसे करते हैं. ठीक है, और ओपन सीवी पाइथन कोई लिंक है तो मैंने शेयर कर दो. मैं उनसे बात करती हूँ, अगर कोई पॉसिबल होगा मैं उनको बोलूंगी कोई लिंक है तो दे दो जहां से बच्चे डाउनलोड कर ले. ठीक है, हाँ. तो मीन, मीडियन एंड मोड ये. और देखो आई एम बहुत ही यंग लोगों को प्रेजेंट करती हूँ और यंग लोगों को प्रेजेंट करने का ये भी पर्पस है कि आप लोग उनसे पूछ सकते हैं कि आप मतलब कम उम्र में इतना प्रोग्रेस, हमें क्या करना चाहिए, क्या और प्रोग्रेस होना चाहिए. ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ, बट डोंट गो फॉर ए पर्सनल क्वेश्चंस. यस मैम. अच्छा, इसने क्या किया? ये एसपीएसएस का ना एक यही ड्रॉबैक है. ये क्या करता है, ये बहुत कुछ निकाल कर दे देता है. अटरम शटरम ये जैसे ना ये चीजें कि इसका कोई मतलब नहीं है. फ्रीक्वेंसी निकाल दी, ये निकाल दी. जब जो रिसर्चर होता है ना फिर वो क्या करता है, छांटता है. एक्सेल में ये सब कुछ नहीं है. जब मैं एक्सेल में ये सब कुछ दिखाऊंगी ना आपको और मजा आएगा. मुझे ना एसपीएसएस से ज्यादा एक्सेल आता है, तो एक्सेल अच्छा लगता है. देखो आई फाउंड, ये देखो निकल आ गया. मीन था 19.40, मीडियन 20 है. इसका मतलब जो एज ग्रुप है, मतलब अगर ये शुरू हुआ है इट स्टार्ट फ्रॉम 15 एंड एंड फ्रॉम 25. ठीक है, तो इसका जो है 25 है तो बीच जो मिड वैल्यू है दैट इज 20 शुड बी मीडियन, मतलब मीडियन होगा इस ग्रुप का. ठीक है, एंड मोड इज 15. मोड क्या होता है? व्हाट इज अ मोड? कोई बोलेगा मोड क्या है? या यहाँ पे ना मैंने कुछ एग्जांपल दिए, जब मैं पीपीटी शेयर करूँ ना, गो थ्रू, रीड इट एंड डू द प्रैक्टिस. इफ पॉसिबल कन्वर्ट, जब मैडम पढ़ाएंगे आपको मीन, मोड, मीडियन बताएंगे पाइथन में, use this, do these examples with Python, do this example with Excel. SPSS is not available with you, do that. And the number of times an observation occurs in an yes, मोड में आप ये बता सकते हो कि एक पर्टिकुलर वैल्यू कितने बार ऑकर है, कर रहा है. ठीक है, दैट इज
मोड, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे द मोड ऑफ 4 2 4 3 2 2 इज 2 बिकॉज इट इज ऑकर 3 टाइम्स. कौन सा वाला किसका मैंने पूछा था? 2 टाइम्स 4, मोड ऑफ 4. ठीक है, यहाँ मोड ऑफ 4 ऑफ ये जो है इसका कितना है? 2. Mode means mode is a data set, is the number that occur most frequently in the set, a number which is most frequently used in the data set. To easily find the mode, put the number in order and at least to greatest and count how many times the each number occurs. तो मोड से भी हमें एक सिग्निफिकेंस मिल जाता है कि कौन सा नंबर कौन सा वैल्यू ज्यादा रिपीट हुआ है. ठीक है, दैट इज मोड. लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी जैसे रियल लाइफ में प्रैक्टिकली कुछ है तो जो ज्यादा यूज है, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो यूज है दैट इज यूज्ड बाय मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू. एवरेज इज वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली यूज इन डेटा. लेकिन अभी देखो मैंने इमीडिएटली थोड़ा सा हमारा कहीं ये भी आपको समझने की जरूरत है कि अब मीन एवरेज कहाँ पे है. जहां पे परसेप्शन की बात होगी वहां पे एवरेज बहुत अच्छा है यूज कर. लेकिन जहां पे एज की बात हुई थी, ग्रुप एज की बात हुई थी मेरा डेटा सेट में, वहां पे हम इंटरप्रेट ही नहीं कर पा रहे थे कि क्या एज ग्रुप, इसीलिए मैंने होल एज ली. वहां पे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं. तो ये चीज भी, ये छोटी छोटी बारीकी भी आपको समझनी पड़ेगी और ये सब एक्सपीरियंस से आता है कि कहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है. अब मोड वैल्यूज chapter in higher secondary and senior secondary. yes, and mode value is 15. कौन सा वैल्यू है 15 जो 15 टाइम्स ऑकर हुआ है? अगर हमें वैल्यू के साथ भी चाहिए तो 15 मतलब कौन सा वैल्यू ज्यादा टाइम रिपीट हुआ है, वो है 15. एक बार डेटा सेट को देख ले हम. यस सर. ठीक है, इसमें 15 वो मोड वैल्यू बता रहा है. इसका मतलब है कि द 15 वैल्यू कंपैरेटिवली अदर वैल्यूज आर रिपीट मोर. अब ये एक 15 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, ये 4 टाइम रिपीट है इसलिए इसने 15 लिया है. अगर मैं 16 लेती हूँ, 16 को देखती हूँ, सॉफ्टवेयर गलत नहीं देगा. सॉफ्टवेयर ये हम चेक करें, एक 16 3 टाइम्स है. ठीक है, so mode value in this, that means the 15 is repeated more time. ठीक है, more time. तो मतलब इसमें 15 एज ग्रुप ज्यादा रिपीट हुआ है. ठीक है, got it? Yes, ma'am. Shall I stop? Yes, ma'am. Yeah, sure. अच्छा, अभी आप लोग ये, so what we have learned, अगर हमने प्रैक्टिकली देखेंगे और एंड टुमारो I will take your data set जो हमने कंपाइल किया ना डेटा, उसमें क्या गड़बड़ हो रही है वो भी मैं गलती भी आप बताऊंगी कि क्या गलत था, कि डेटा विजिबल क्यों नहीं हो रहे थे, ऊपर क्यों नहीं दिख रहे थे, एंड वो भी आपको समझाऊंगी ताकि अगर आप लोग करें, इफ यू फॉलो द प्रोसीजर यू शुड नॉट फेस दैट डिफिकल्टी. आई एम नॉट नेवर फेसिंग दिस डिफिकल्टी, फर्स्ट टाइम हैपन दिस. आई एम every time I collect the data, I put it in Excel sheet and then I export it in SPSS and then I use it. I will check what happened. Maybe export करते टाइम कुछ गलत हुआ है. Some information I have to give. This thing happened, but this is first time this happened. Otherwise, not happen. So what we have learned? We learn primary data collection. See, this is the secondary data. जो मैंने age दे दी ना कोई, मैं आपको कल एक एग्जांपल ना सेकेंडरी डेटा पर भी लूंगी, कोरिलेशन का, इसका थोड़ा सा सेकेंडरी डेटा पर. So you should be get familiar about the primary data and secondary data also. So we should understand frequency, how software is calculated. We understood percentage. We understood central three tools of central tendency: one mean, mode, and min. Tomorrow I will show 2 more tools: standard deviation and variance, and then correlation and regression. तो कल मैं पूरा शुरू ही प्रैक्टिकल से शुरू करूंगी, नो थ्योरी वर्क. थ्योरी में जो एक बार पीपीटी जो आ रहा है उस पीपीटी को ही देखेंगे, अदरवाइज प्रैक्टिकल पोर्शन को ज्यादा करेंगे. ठीक है, तो सब अंडरस्टूड? Yes. Is class was work or not?
Yes. Yes, ma'am. अभी तक अभी 70 है, मतलब थोड़ा देर पहले 1 बजे तक बच्चे चले जाते हैं। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, भूख वगैरह लगती है, लेकिन अगर लगता है तो थोड़ा सा अपने भूख को भी टॉलरेट करो। मैम इस डेटा को भेज देना। मैं जो तुम्हारा वाला डेटा, ये तो मेरा एनालिसिस का डेटा है, क्रॉस कल्चर डाइवर्सिटी का। हमारा वाला तुम्हारा वाला डेटा को भेजूंगी। पहले मैं खुद तो उसको एक्सपोर्ट कर लूं कि उसमें क्या दिक्कत हुई कि वो एक्सपोर्ट नहीं किया। मैम आज की पीपीटी परसों की पीपीटी सब शेयर करूंगी मैं आप लोगों के साथ। दिस इज योर मटेरियल, वी प्रिपेयर फॉर यू। मंजुला मैम की भी पीपीटी है, स्वाति मैम की भी पीपीटी है, एंड स्क्रीन शेयर सॉफ्ट ये करना बंद करा। सब लोगों की पीपीटी है। मुझे कंप्लेन आ रही है कि मेल्स वगैरह बाउंस होते हैं, तो मैं इसको मेल्स नहीं आ रहे, कोई मेल्स नहीं आ रहे। हाँ पता नहीं, मुझे लगता है बल्क मेल की कुछ दिक्कत हो रही है, मेल्स नहीं आ रहे। तो मैं एक रिपोजिटरी बनाती हूँ, उसमें जैसे आप लोगों ने बनाई थी ना ओएस की रिपोजिटरी, वैसे एक रिपोजिटरी बनाकर उसमें सब करूंगी और सबको एक लिंक दे दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, मैं आई गॉट कंप्लेन कि मेल नहीं मिल रहा है, तो सो मैंने क्या किया, इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैं डाल रही हूँ आपको जूम का लिंक। गेटिंग माई पॉइंट? तो आज का क्लास आपको वर्क लगा, इंटरेस्टिंग था? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। यस मैम। हाँ अभी कल और बताऊंगी मैं, तो कोरिलेशन बताऊंगी मैं। उसमें कोरिलेशन में आपको स्कैटर डायग्राम, तब आपको और अच्छा लगेगा कोरिलेशन का स्केल, रिग्रेशन। मैडम ने ले लिया होगा, देखो अटेंडेंस मैम तो ले रही है। मैं आपको एक चीज बताऊंगी, इसमें ना ये इलेक्ट्रॉनिक अटेंडेंस भी सेव हो जाती है, और वो मिनट्स के हिसाब से, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई ओपन द जूम, 1 मिनट में रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ इसकी। नो मैम। ओके, गो एंड टेक अ लंच एंड स्टडी। ठीक है, स्टडी बस only Your class or somebody else will come. my class. 2 hours I will take, then guest lecture. Madam will Manjula ma'am take Wednesday, Thursday and Friday. And Thursday there is one more guest lecture, and he is very expert. He is from Dehradun, petroleum, famous University of Petroleum. He is a data scientist there, and he will take the class. Got it? Okay, ma'am. And he is experienced, like experienced person, not a young. I am presenting both type of people in front of me. Little aged means experienced, and youngster. So how you will take them, it will depend upon you. And what you are taking with them, that is also depend upon you. Okay? Shall we leave?